all you have to do is give us your 90 days and we'll help you in upskill and grow. So choose your favorite course, go to our website, start learning, and we are ready with your refunds. We have helped thousands of students and they have got more than 5 crore rupees of refund. So it's not only helping them in monetary terms, it's also helping them in being consistent and complete the course. So last year our completion rate was 20%, and with 390 challenge, we have seen it significantly going up. See, the idea of 390 was to make students motivated in the form of money, so that they complete the course and they get money. But our main aim was to make students consistent so that they become market ready. We all know that the tech job market has become really challenging, and it is not always going to be like this. Seeing all this, we have come up with something that we never offer. You all know that we have been doing this 390 challenge where you finish 90% of the course. In 90 days, you get 90% of the cost. In addition to this, we have also reduced the upfront fee by 30%. So make the best use of this and invest in your skills, the all-time most valuable asset. Hello, guys. How are you all? And welcome back to this amazing channel, Geeks for Geeks Practice. My name is Abhinav, and we are back with our next DSA marathon, which is of the topic dynamic programming. Okay, and hi Subham, how are you? Yeah, long time, bro. मैं agentic AI को explain कर रहा हूँ, उसका कोई course है GPT पे. Yeah, I'm not sure, Subham, if there's a course of that. You can maybe check or you can explore. Right, I'm actually not sure about that. Genetic AI, I think you are saying. Yeah, hello, boat. Good evening, guys. कैसे हो आप सब? So let's wait for 2 minutes for everyone to join. I think people must have got notification, and it will take some time for them to join. So let's wait for everyone to join. Till then, you guys can just hit the like button so that I can know that how many people have actually joined and what is the like count. So hello, guys. Hello. Please write a +1 or write a hello so that I can know that who all have joined. Hello, everyone. Cool. So, okay, is there anyone who was also present in the previous class, the last class of us? Hi, Sivam. Hello, how are you? Great. Hi, Mahesh. Hi. Hello. Yeah, so we have planned multiple problems. I will discuss the agenda to you with you guys before starting. Okay. Before starting, I will definitely discuss the agenda of today's session, that what we are going to discuss in today, like this whole marathon of 4 hours, right? The exclusive DSA marathon, right? Okay, I think we should start now. People have joined. Great. So let me share the screen and then we will start the class. Okay. So yeah, yes, Mahesh, you can ask what your question do you have. If there is any such specific doubt, uh, we will actually take that doubt at the last. So in between, after every hour, we will be having a doubt session. So if you guys have any doubt, you can just ask that to me later. Okay, and we can discuss all the doubts at the last.
how much minimum course should we need to get so it depends on, okay, please add problem in description so that we can get solved. Yes, bot. So basically for the previous class also, I have given the questions to the team so that you guys can get that questions and you guys can actually solve the same questions. Even I've given the assignments also. So I'm not sure if it is get it added or not, because it was Sunday, so people was on leave. Maybe it will be there by tomorrow. Okay. And for today also I will do the same. I will add the questions in the description so that you guys can solve, right? Mahesh, simple thing is, whenever you feel less confident about the topic, you should solve problems. Okay. Once you feel that you are confident about the particular topic you are solving, then you should stop solving problem and then you can move forward, right? There is no limit. I cannot say solve 5 or 10 problems, right? It depends on when you are feeling yourself confident in that particular topic, right? Okay. But yeah, great. So I think we should start now. We have people here. So guys, please like the stream if you are here. We have just 8 likes, at least make it 15. Okay. So what is our agenda for today? What is our agenda for today? Let's discuss that. Okay. So guys, the very first thing that we are going to discuss today is the knapsack problem. Okay. The very famous problem of DP, the knapsack problem. And we will not just discuss the knapsack problem, we'll discuss all the 3 variants of that. First, we will discuss the fractional knapsack. Then we will discuss the 0-1 knapsack. And third, we will discuss the unbounded knapsack. So first agenda will be to discuss about the knapsack problem, all the 3 variants of knapsack. This variant is actually solved using greedy. This is a greedy variant, but these both are DP problems. So 0-1 knapsack and unbounded knapsack, they both are solved using DP only, right? Now, the second thing that we will discuss will be LCS. LCS means, okay, not directly LCS. We will actually solve some more problems of 2D DP, right? So there are some more problems of 2D DP that will be solved that will be similar to the knapsack problem. For example, we have a problem called target sum. Okay. Or there is a problem called subset sum, where we have to divide the array into 2 subsets, right? So these problems we will solve. Okay. Now the next thing, the third problem that we'll be solving will be LCS, means longest common subsequence. And we will also take some of the variations for the same, some variations of the longest common subsequence, right? And the last agenda for today will be LIS, means longest increasing subsequence. So it depends like how much we can do today. There is no hurry. If the topics will be left, we can cover it in the next class also, right? But yeah, this is what I have planned for today. Okay. First, the knapsack, fractional knapsack, 0-1 knapsack, and unbounded knapsack. After that, the 2D DP, the LCS, and the LIS. These are the 4 topics that we have planned for this particular class. Okay. Does it make sense? Can we move forward, guys? Write a +1 if we can move forward. All of you, write a +1. Write a +1. Great, great. Chalo. बढ़िया यार, बढ़िया है. So the very first thing that we will discuss is the knapsack problem. Right. So we have 3 variations of knapsack problem. So first let's discuss that what knapsack problem is. What do you mean by a knapsack problem, right? So if you can see, okay. You can see I have opened all the 3 articles. First is this fractional knapsack problem. Then we have the 0-1 knapsack problem. And then we have the unbounded knapsack problem, right? So all of these 3 we will discuss today. So the first is the fractional knapsack problem. What do you mean by the fractional knapsack? So what happens in the fractional knapsack problem? Look, knapsack problems are same. They have the same problem statement. Just some small changes are there in all of 3. So first discuss the basic. So Code Galaxy, that thing we have already discussed yesterday, right? So yesterday also we had our part 1 of this DP live. This is the part 2 video. So you can be, after this class, you can watch the previous recording of the previous class also.
where I have explained everything in detail. What is DP, introduction to DP, top down approach, bottom up approach, tabulation, and recursive approach, memoization approach. All of that I have explained in the last class, so you can check out the recording in the same channel. For now, let's discuss fractional knapsack, right? But yeah, so what is the knapsack problem? Let's first discuss what is the knapsack problem. So in knapsack problem, what you are having is, you guys are having with n items with you. क्या होते हैं हमारे पास? n items होते हैं. We have n items, right? Now for all those n items, you have two things present. First, you have the prices of all those n items, like what is the price of each item. That is the first thing you have. Okay, I will add the items. And second thing is that you have the weight of all those items. What? Weight of all those items you have. ठीक है, तो ये दो चीजें हमें पता होती हैं. अब फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लो 5 आइटम्स हैं, ठीक है, तो हमें उन पांचों आइटम का प्राइस और उन पांचों आइटम का हमें वेट पता होगा. फॉर एग्जांपल मान लो पहले आइटम का जो प्राइस है वो है 10 रुपए, दूसरे का है 1 रुपए, फिर है लेट्स से 50, फिर है 23, फिर है 31. ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारे सारे आइटम्स का प्राइस है, 5 के 5 आइटम का 0 1 2 3 4. ठीक है, और हमारा हर आइटम का वेट हमें पता होता है कि उसका वेट क्या है. ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो हमारे आइटम का वेट है 10 वाले का है 3, इसका है 2, इसका है लेट्स से वेट, सो दिस 3 राइट, इसका लेट्स से वेट है 30. नाउ इसका वेट है, मैंने कुछ जरा बड़ा कर दिया, कोई नहीं, ठीक है, इसका वेट है 10 और लेट्स से इसका वेट है 8. ठीक है, तो आपके पास पांचों आइटम्स के क्या क्या पता है आपको पता है आपके पास 5 आइटम्स हैं और उन सारे आइटम्स के आपको प्राइस पता है कि हर एक आइटम का प्राइस कितना है और हर एक आइटम का वेट कितना है. ठीक है, वो चीज आपको पता है. दैट दिस इज व्हाट यू नो, राइट? तो अब होता क्या है कि आपको एक नैप सैक दिया होता है. पता है सैक क्या होता है? नैप सैक क्या होता है? नैप सैक मतलब होता है एक बैग, उसको हम बोरा बोलते हैं इंग्लिश में, राइट, हिंदी में, राइट. तो एक आपको एक बैग दिया होता है और आपके पास उस बैग की कुछ कैपेसिटी होती है. मान लो बैग की कैपेसिटी है, मान लेते हैं 40 kg. ठीक है, मतलब आप उस बैग में सिर्फ 40 किलो तक का सामान ही रख सकते हो. तो आपके बैग की कैपेसिटी है 40 kg और आपके पास इस तरीके से कुछ n आइटम दे रखे हैं जहां हर एक आइटम का प्राइस और हर एक आइटम का वेट पता है. ठीक है, अब आपको करना क्या होता है, आपको इन आइटम्स में से कुछ आइटम्स को चूज करना होता है सो दैट जो आपका टोटल वेट है वो इस कैपेसिटी के अंदर रहे, मतलब लेस देन या इक्वल टू कैपेसिटी रहे, और जो आपके प्राइस ऑफ द आइटम है वो मैक्सिमम रहे. प्राइस ऑफ द मैक्सिमम. वैसे मैं यहां से इसको मैंने काफी बड़ा कर दिया, मैं इसको 5 और 3 कर देता हूं, बाकी सब तो ठीक है. और मैं एक काम करता हूं, मैं कैपेसिटी को 20 कर देता हूं. ठीक है, या 10 कर देता हूं कैपेसिटी को. एंड तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू बिल्ड अ बेटर टेस्ट केस जिससे आपको काफी अच्छे से समझ में आए. ठीक है, तो 7 यहाँ पे 2 कर लो, इसको कर लो 10. अब ठीक है, ठीक है, तो आपके पास कैपेसिटी है 10 kg की. ठीक है, तो आपको 10 kg तक के मैक्सिमम आइटम चाहिए, आपको 10 kg तक के मैक्सिमम आइटम चाहिए सो दैट जो आप आइटम्स लें उनका वेट तो टोटल 10 kg हो बट उसका प्राइस मैक्सिमम हो. ठीक है, तो आप ऐसे कौन से आइटम ले सकते हो, ये होता है नैपसैक प्रॉब्लम. तो प्रॉब्लम सब लोग समझ गए. आपको n आइटम्स दे रखे होते हैं, हर आइटम का प्राइस और वेट पता होता है, एक कैपेसिटी दे रखी होती है, मतलब आपको ये इतने आइटम्स चाहिए. क्या ये बात सबको क्लियर है? एवरीवन? क्लियर है एवरीवन? प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोलिए. ठीक है, बढ़िया. अब देखो, एज आई सेड 3 वेरिएशंस होते हैं, 3 वेरिएशंस होते हैं. ठीक है, तो पहला वेरिएशन तो ये होता है कि हमारे पास फ्रैक्शनल नैपसैक होता है. ठीक है,
फ्रैक्शनल मतलब क्या होता है कि हम एक आइटम को फ्रैक्शनल टाइम भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं सेम पूरे उसको कॉपी करता हूं और हम पहले इस प्रॉब्लम को फ्रैक्शनल नैपसैक के टर्म्स में सॉल्व करते हैं, ठीक है। फ्रैक्शनल नैपसैक क्या है? व्हाट इज फ्रैक्शनल नैपसैक? फ्रैक्शनल नैपसैक का मतलब होता है कि आप एक आइटम को फ्रैक्शनल टाइम भी ले सकते हो, फ्रैक्शनल नैपसैक। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आइटम है, इसका वेट 8 किलो है, ठीक है, और इसका वैल्यू 10 है। तो फ्रैक्शनल मतलब कि आप अगर चाहो तो आप इस आइटम को सिर्फ 4 किलो ले सकते हो, जरूरी नहीं आप पूरा ले लो। आप उसका फ्रैक्शनल आज 4 किलो, 4.5 किलो, 5 किलो भी ले सकते हो। अब जितना लोगे उतना ही आपको प्राइस मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले तो बात आती है कि हमें निकालना है कि मैक्सिमम प्राइस हम लोग कितना ले सकते हैं। मैक्सिमम प्राइस हम लोग कितना ले सकते हैं हमें निकालना है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, मान लेते हैं मैं आपसे बोलता हूं कि भाई आप किसी मार्केट में गए, ठीक है, वहां शुगर है। इस शुगर का जो प्राइस है वो हम बोल रहे हैं कि 100 रुपए है 2 किलो का, लेट से। तो 2 किलो चीनी का 100 रुपए का प्राइस है, और आपका वहीं पे पास में रखी हुई लेट से चाय पत्ती टी रखी हुई है, और जो टी है वो 1 किलो है लेट से 400 की, फॉर एग्जाम्पल। तो आप कौन से आइटम को लोगे? विच आइटम विल यू चूज इफ यू वांट द मैक्सिमम प्राइस? आपकी अगर मान लो 3 किलो की कैपेसिटी है या 2 किलो की कैपेसिटी है, मान लेते हैं आपकी कैपेसिटी 2 किलो की है, ठीक है। तो या तो अगर आप 2 किलो चीनी ले लोगे तो आपको सिर्फ 100 रुपए का आइटम मिलेगा, बट अगर आप उसके जगह 1 किलो चाय ले लोगे तो आपको 400 रुपए मिल जाएंगे। क्यों? क्या बेटर रहेगा? चाय। क्यों चाय बेटर है? क्योंकि उसकी जो प्राइस और वेट जो डिफरेंस है, जो प्राइस बाय वेट का जो रेशियो है, मतलब पर केजी कितना प्राइस है, राइट, वो हमारा बेटर रहेगा। एग्जैक्टली तो हम इसके लिए क्या करेंगे? एग्जैक्टली 400 एंड हाफ ऑफ 100। तो हम 1 किलो वी विल टेक 1 kg ऑफ टी 400 प्लस 1 kg ऑफ शुगर 100। So you will make it what? You will make it 500. So this is what you can do in case of fractional knapsack. You can take partial thing and you will take that item first which has a higher price by weight difference. जैसे इसका जो price by weight है, the price by weight value of this is 50 and this is 400. So which is better? This tea is very costly, right? So which is better? This tea is better. Means taking tea is a better option. So you will take tea and you will not take the sugar and you will have 400. And then after taking tea, you still have 1 kg left. Then that 1 kg you will take sugar. Okay. Guys, please like the stream. We just have 10 likes. Please do hit the like button. It works as a attendance, right? So please do it. Okay. Great. Great. ठीक है, तो आप यहां पे देखो what we will do, how we will solve this problem of fractional knapsack. So in this case what we will do, let's say if we have 10 kg of capacity. So there are multiple things that we can take. Let's say if I will take कि okay, ये जो है ये वाला item जो है, let's take this item. अब this item will give me the price of 10, but it will also give me the weight of 8. Now only 2 kg of weight is remaining. Now let's say for that 2 kg I have taken this 7. So your price is 17 and your weight is 10. But you can have a better price. Yeah, this is a greedy. This is a greedy. This one is greedy only. I will tell you why. Okay, this is not DP. The second version is DP. That also I will tell you. Okay, bot. I will tell you that. Okay, great. Great. So what we will do, if you will take this one, if you will take this one, 10 price, plus this and this. So you can say it will be 10 plus 1 plus 5 plus 7, which will be equal to, no, I think the better will be, so the best thing is
then you can first take the price by weight ratio, and whichever will be having the better price and weight ratio, you will take that item first. Okay, so for example, this is fractional labs. Okay, for example, this is having the price and weight ratio of 10 by 3, which is 3.33. This is 1 by 2, which is 0.5. Now 5 by 3 is 1.66. 7 by 2 is 3.5. And 10 by 8 is 1.25. So which item we will take? So once we have got the price by weight ratio of all the items, what we do, we sort this whole array on the basis of price by weight. How we sort it? So basically, when we calculate price by weight, we also have their indexes attached. So this is index number 0, index number 1, index number 2, index number 3, index number 4. We can take it as a pair. Okay. So when I will sort this price by weight ratio array, what will come first? Can anyone tell me which item will come first? Which item? हाँ जी, एग्जैक्टली तो आप देखो ये आइटम पहले आएगा. Okay, so you can, okay, so basically we have to sort in ascending order. If you have to sort in descending order, this will come first. But let's say we are sorting in ascending order. You're right, Mahesh. In ascending order, what will happen? This item will come first. Whatever order you want to sort, you can sort, right? So let's say we're sorting in ascending order. So in ascending order, what will happen? That this item will come first. So 0.5. Then next 1.25. And we also have its index with us because it's a pair, right? Then 1.66, then 3.33, and then 3.5. Okay, then 3.5. So this is what we will do here. Okay, this is what we will do here. बढ़िया, ग्रेट. अब देखो क्या करेंगे. हमें पता है कि कौन से आइटम की जो प्राइस बाय वेट रेशियो है वो ज्यादा है. तो लास्ट आइटम जो है इट हैज द मोर प्राइस बाय वेट रेशियो, राइट? तो इफ आइटम हैज अ मोर प्राइस बाय वेट रेशियो, व्हाट वी विल डू, वी विल टेक दैट आइटम फर्स्ट. तो कौन सा आइटम है? तो यू कैन सी हियर दैट द इंडेक्स नंबर 3 इज देयर. तो मींस आई विल टेक दिस इंडेक्स नंबर 3 फर्स्ट. ओके, so I will take this index number 3 first. What will be my price? My price will be 7. Price, okay? This price is 7 and my weight will be 2. Now still my capacity is 10, weight is 2, means I can take more item. So if I will take more, next is index number 0. So now I will take index number 0. Now I will take index number 0. So index number 0, I have taken weight 3 and cost 10. Now I will take index number 2. So index number 2 is this. Means weight 3, cost 5. Okay. After that, we have index number 4. So I'm going from the back, right? Index number 4 we have. Up index number 4 has the weight 8. Okay. But our capacity remaining is just 3. You can see we have taken already 7. No, we have taken 8 already. Okay. So capacity was 10, means we can just take 2 kg of more. So from this 8, I will take only 2 kg, which is 8 by 2. Sorry, 2 by 8. How much? 25% of this. So your price will also be 25%, means 2.5. So that I will add here. So total will be 7 plus 10 plus 5 plus 2.5, which is 24.5. This is the maximum price that you can get from here. Does it make sense to everyone? Is it clear for everyone? Right?
right? So guys, this is how we visualize the problem. You can see we have visualized the whole problem, right? And now we will code it. So throughout this DP series, in the last class also, how I have solved a problem. So every problem, we first discuss the problem statement, then we discuss the approach, then we have written the recursive code, then we memorize that recursive code, then we have written the tabulative code, and then we conclude that problem. So same हम आज भी करेंगे. We will first understand the problem statement that we understood here, then we understood the logic. Now we will write the code. Okay, because this is just a greedy problem here, DP recursion is not required. We will directly write the code, right? And see, I always say, whether it is DP, whether it is any other problem, what matters is your practice. What matters is your practice, right? That is why even if you will check the self-paced course, our self-paced course of DSC and Geeks for Geeks, we have uh, given a lot of practice problem after every module. If you will check any module of that course of self-paced GFG, we have given a lot of practice problem, and you also have the recorded video editorial of that problems, right? So if you guys wanted to take any of the courses from GFG, guys, let me tell you one thing, that currently a very good offer is going on. It's a 390 challenge. So what happens is that in 390 challenge, if you buy any course on Geeks or Geeks, okay, and if you complete the 90% of the course in 90 days, you will get 90% back of the money, right? So for example, if you buy a course of 2000 rupees, okay, and if you complete the 90% of the course in 90 days, then you will get 1800 rupees back. Yeah, you will get the cash back of 1800 rupees. This is the main thing about this particular offer, right? So please do check this out, this particular offer where you can actually buy any course and you will get the 90% of the amount back, right? That is one thing. Now let's move forward to what we are doing. So I hope that now fractional knapsack something which is clear. Okay, you know that. So now let's continue with the code part of that. Okay, so we all have this practice here. So let's have this practice. ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा हुआ है. लेट मी, कूल, बढ़िया यार. ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पर कि हम लोग क्या कर रहे हैं. Here the same thing is given to us. We are having this value array and the weight array, just like we were having here this prices and weight na. Here we have value and weight. So we have two vectors with the name value and weight. So value and weight, and we have the capacity. Okay, so let's implement the same thing here. Let's, okay, why it's not getting zoom. Okay, no matter. So first of all, I will take the size of the value array. Means basically it will give me the number of items, कितने items हैं. ठीक है, वो हमें बताएगा. अब हम क्या करेंगे इसके बाद में कि as I told you कि we have to go through all the price and weights, and for each item we will store its price and weight ratio and the index in a list, right? So what I can do, I can take a vector of pair which will store the value by weight, price by weight ratio, right? So it will be a double and the index will be an integer, right? So let's name it as a vector v. So new vector. Okay, now what I will do, what I am doing, I was writing the Java code that new is using Java. यहाँ पे सिर्फ इतना ही काम करेगा और required नहीं है, don't worry. Okay, yeah. So now I will go through all the indexes, all the items one by one. ठीक है, please hit the like button, guys. Please hit the like button, everyone. So we will have this for loop, okay, starting from 0 to n minus 1 we will have, right? Now what we will do is key in this v, we will insert, first of all we will find the ratio. What ratio? The ratio of the price, means the value of that particular item, divided by the weight of that particular item, that I will take. And because I want this in a double, I will convert it to double so that we can have proper double values, okay, not integer values. So
I will have these double values here. Okay. Now what I will do, in this vector, I will push back what? This R along with the index. You can see how we did, how we get the vector. First was the price by weight, then there was the index also, right? So we got it. After doing this, we can sort the vector. So v dot begin, comma, v dot end, right? This is done. This is done. अब देखो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि now I will start iterating from the back of the vector. Why back? Because this vector is sorted in increasing order. So the item which is having the highest price by weight ratio, that must be present at the last, right? So I will start from the back and I will take one by one all the items. So first I will take, okay, which index is this? Okay, so I will take the index, so which is vi dot second, and now I have to take the item of this particular index, and here I will take the answer also. So what I will say, if the weight, okay, sorry, yeah, it will be double. Yeah, thanks bot for this. Yeah, so now I'm saying, if the weight of I is greater than, oh sorry, is less than equal to capacity. So for example, your capacity is 10 kg and the weight of the current item is just 2 kg. जैसे यहाँ पे क्या था कि capacity was 10, right, and weight was just 2. So what I can take the whole item. तो मैं क्या करूँगा, in the answer I will add the value of that whole item I, and then from the capacity I will subtract the weight. ठीक है, तो in the answer I will add the value, in the answer I will add the value that I have taken this particular item, and because when I've taken this item, my capacity will go down, right? But in some case, my capacity will be greater, less than the weight. For example, if you remember, when we have taken all these three items, so my weight was 8. My weight was 8, right? And capacity was 10. So my remaining capacity was just 2. And the next item was having weight 8. So I cannot take the whole item of weight 8. So what I will do? I will first of all find how much percent of item I can take, which is capacity divided by the item's weight. And that percent price I will take. So what I will do? I will say, in this case, my answer will be, and by the way, my answer will also be double. So my answer will be the capacity divided by the weight and then multiply by the value. And this also I will make double. Okay, great. And at the last, I will return my answer. And here I will make my capacity 0. Okay, and then break also. No need to move forward. Once the capacity is 0, simply break, right? Okay, so we got some problem, I think. What is the problem? So we are getting weight as 220 and the output is 240. Why? Why? Okay, so we are having some problem. Let me see. So we are in value by weight ratio, we are sorting it, then we are going from the back. We are taking the second, means the, okay, here it should be the index, sorry. Here it should be IND, right? The IND, not the I. The index of that particular which having the highest, right? Exactly. Let's submit it. Great. ठीक है. So what we did?
we have solved this problem knapsack, fractional knapsack, with simple greedy approach. Does it make sense? Is it clear to everyone? All of you? Is this problem clear? Please hit the like button if the problem is clear to you all. I suggest you so that you don't have to worry about type. No, like we have to go with C++ only. In the last class also we did C++. So let's go forward. See, the main thing that matters is the logic. If you know the logic, you can code in any language. Either C++, either Java, no matter, right? So yeah, it's good. Okay. Cool guys. I hope this is clear to everyone, right? Please write a +1 if it's clear. Okay. So is this clear to everyone? All of you? So we move forward to the knapsack problem, like the 0 1 knapsack. So this was the a fractional knapsack, right? So next thing that we will do will be 0 1 knapsack problem. So this was just I will say a greedy problem. Now let's see that why in 0 1 knapsack we cannot use this approach. That's the major thing, right? So let's just discuss that. Why there we can not have this. So ठीक है बढ़िया. So what we do actually here is, तो मान लेते हैं कि सेम प्रॉब्लम होता ऑफ 0 1 knapsack, राइट? तो व्हाट हैपेंस इन 0 1 knapsack? लेट्स सी. चलो ये हो गया, ठीक है. तो इन 0 1 knapsack व्हाट हैपेंस? फर्स्ट थिंग इज that we cannot have fractional problem items. We cannot take items fractional, right? Either, so what do you mean by 0 1? 0 1 means either you will take a item or you will not take item. That's it. Means either you will consider the item or you will not consider the item. This is what happens in 0 1 knapsack. Okay. So for example, in this particular case, if it's a 0 1 knapsack problem, then what will you do? Then what we will do? देखो, तब क्या होगा कि if you will go in that way in which you will take the prices by weight, it is not possible, right? इसे मान लो कि जो मैंने पहला एग्जांपल लिया था कि भाई आपके पास अगर 100 रुपए की चीनी 2 किलो है, ठीक है, और 400 रुपए की 1 किलो चाय है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे भाई ठीक है, आप 1 किलो चाय ले लो क्योंकि कैपेसिटी 2 किलो की थी, तो आप 1 किलो चाय ले लो और 1 किलो चीनी ले लो, ठीक है. बट वो चीज यहां पे नहीं हो पाएगी 0 1 knapsack में. यहां आप पार्शियल नहीं ले सकते हो कि आपने 2 की जगह 1 किलो चीनी ले ली. अगर 2 किलो है मतलब 2 किलो का ही पैकेट है भाई, आप 1 किलो नहीं ले सकते हो. तो या तो आप 2 किलो चीनी ले लो 100 रुपए की, या आप 1 किलो चाय ले लो, क्योंकि दोनों भी नहीं ले सकते हो, कैपेसिटी सिर्फ 2 किलो की है. तो आप क्या करोगे? तो आप ऑब्वियसली 400 रुपए में, क्योंकि चाय ज्यादा अच्छी है, महंगी है, तो आप वो ले लोगे, राइट? तो ये चीज होती है. तो अब ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं? इसके लिए ग्रीडी अप्रोच नहीं यूज कर सकते हैं. आप यूज करोगे तो रॉन्ग जाएगा, ठीक है. यहां पे हम लोग डीपी अप्रोच का यूज करते हैं, जिसमें हम सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस निकाल के चेक करते हैं. मतलब हर एक प्रॉब्लम को हम चेक करते हैं दैट आइदर टेक इट और नॉट टेक इट, राइट? टेक इट और नॉट टेक इट. तो हर एक अगर इसको नहीं लेंगे तो क्या होगा, ले लेंगे तो क्या होगा, और ऐसे करते करते हम सारे प्रॉब्लम्स के लिए हम चेक करते हैं, राइट? तो लेट मी शो यू. इट शुड हैव बीन 400 प्लस 50. नहीं, हम पार्शियल ले ही नहीं सकते ना यार. वी कैन नॉट टेक पार्शियल बोथ. ओके, तो अच्छा, हाँ, ओके, इन द प्रीवियस केस इट शुड बी 400 प्लस 50. या
450, but yeah, in this case of DP it should be just 400, right? It cannot be more than that. Okay, are you guys there? Mahesh, Nopawong, Boat, everyone is there, na? Rajnu, hi. Code Galaxy, yeah, great, ठीक है. तो अब क्या करेंगे हम लोग, what we will do now कि इस केस में I will check each and every possible combination that either I will take a element or I will not take a element. So हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल अपने जीरो इंडेक्स से. ठीक है, तो लेट्स से रिकर्जन ऑफ जीरो. अब क्या होगा कि either we will take this zero index or we will not take it. So if I will not take this zero index, my capacity will remain 10 and my total value will remain 0. ठीक है, but if I will take this zero element, this is the not take case, but if I will take this zero element, तो क्या होगा, capacity will become 7 because this 3 will be subtracted from this 7 and the value will become 10, this 10, right? And now I will go to the element number 1, second index, right? Now in the second index, again the same thing, either you will take it or not take it. So let's say if you have also not taken the first index, then again your capacity will be 10, value will be 0. Where I messed the bleed code contest. I understand AR, keep trying. So now capacity will be, I will subtract 2, 8, and now value will be 1. So are you guys getting this thing? What I am trying to say? For every possible index, I will try to take it. When I'm taking something, then my capacity will go down with the weight and my value will increase. It's fine Karthik, this up and down तो ये चलता रहता है यार, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है. एग्जाम के बाद में फिर से बढ़ा लेना, ऐसा कोई परमानेंटली डाउन तो नहीं हो गई ना रेटिंग, फिर से बढ़ सकती है, अगली बार अच्छा करना, बढ़ा लेना. ठीक है, great. So how we will solve it? Let's see. Hi Parth. Let's not discuss this in between. We will discuss it at the last, okay? Whatever doubt you have. So how we do here is that we take a recursion function, right? And in this recursion function, what we do, we take a index I. Okay? Index I means the current index where you are. Then obviously all these three things will always be there. Okay? Now the one thing that, let's take one more thing, n. N means the number of items. Okay? So if I has reached n, means if I has reached the last index yahan tak, that means now it cannot have any more value, so it will just return 0. This is the base case of your recursion. Okay? This is the base case of your recursion. Now what is the recursive case? Recursive case means you will be first having one thing where you will have the not take case. Now what is the not take case? In not take case, what we do, we are not taking the current element. So let's say we are currently at this first index, okay, and we are not taking this first index. Then what I will do, I will go to my next index, and neither my capacity will be affected, neither my value will be affected, right? So what I will do, in not take case, I will simply move to the next index I plus 1, where, so I should put my capacity before, I think. Yeah. So my capacity will be same. My index will go to the next index. My capacity will remain same.
and others thing will also be same. ठीक है, तो ये पार्ट हो जाएगा. लिखते रहो यार. यूएस क्रिस्टियानो, आप कल भी आए थे. नाइस कंसिस्टेंसी. प्लीज ज्वाइन लाइव डेली एंड आस्क दिस डाउट अगेन एंड अगेन. ओके, या. सो ये हो गया. अब टेक केस क्या है? व्हाट इज द टेक केस? टेक केस मीन्स that here you will take the current element. You are taking the current item. When you are taking the current item, what is happening? There are two things happening. The price will be added to your answer, and the weight of the item will be subtracted from your capacity. So what will happen? The value of the item will be added. You will move to the next item here also, and from the capacity, the weight will be subtracted. Remaining will be as it is. Does it make sense? क्या ये बात समझ में आ रही है guys? And now finally your answer will be the maximum of the take case and the not take case. ठीक है, तो लास्ट में आप क्या करोगे? You will return the recursion of, you will start on a zero index, capacity will be as it is, value you can take, n means the size basically, which will be value dot size, val is as it is, wd is as it is. हो गया. इसमें भी कुछ तो मिस्टेक हम कर रहे हैं शायद. Okay, one major thing I missed, one very major thing I missed, that here when you are taking a item, you cannot take it always. So take case will only be possible when the capacity is greater than equal to the item. Let's say that your capacity is 10 kg, but item is of 12 kg. Then you will not take na. So I will check that thing also, that if the capacity is greater than the weight, sorry, is less than the weight, means weight of the item is greater and capacity is less, then you cannot have this take case. फिर आप ये take case नहीं ले सकते हो, तो आपको सिंपली not take को रिटर्न करना पड़ेगा. ठीक है, इस केस में else आप यहां से ले सकते हो. तो अब एक आंसर ले लेंगे. तो बोल रहे हैं अगर ऐसा है तो फिर आंसर को कर दो. By the way, it will run. Yeah, it will be fine. या हम ये कर सकते हैं कि हम एक आंसर ले लेंगे. तो इनिशियली आंसर हो जाएगा नॉट टेक केस. ठीक है, नॉट टेक केस हो गया आंसर. और अगर कैपेसिटी वेट से बड़ा या इक्वल है तो फिर हम लोग टेक केस भी ले लेंगे. ठीक है, और आंसर में उसका मैक्सिमम स्टोर कर लेंगे कि नॉट टेक केस में और टेक केस में मैक्सिमम कितना है. ठीक है, ये भी हो सकता है. Give you meaningful names to variables. I'm not understanding what is I in the. It is meaningful names ना यार. I means the current index. What? I means the current index of the item where we are. That's it. I've written here also I, right? So this is the current index. Let me run this, then I will explain you. Okay. This will give probably TLE. I will see. To TLE आ गया, right? But it is just a recursive code. Let me first explain you this recursive code. Okay, you will understand. Don't worry. Let me explain you how this code is working. Then I will memorize it and I will write the tabulation format also, right? So okay. To
too much memory use need. Exactly. There will be a lot of memory used. There's a memory optimized way also. I will discuss all the ways of knapsack. Don't worry. We'll discuss all the patterns. Okay, not a issue. So cool. So how this is working? Okay, let's take a test case and let's discuss this code on that. So let's take this particular test case, right? So test case is तो ये हमारे टेस्ट केस मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं समझना अच्छे से, बॉट एंड नोपा वोंग एंड एवरीवन, ओके, पार्थ, महेश, everyone. So we are starting from the index number 0. Okay, initially if you will see, I am starting from which index? Index number 0. I am calling this function. Okay, now what I'm doing is that I'm first having the recursion call for index number 0. Okay, capacity here I think was 4, right? Huh. The capacity was 4. Yeah, bottom up is always better. It's always better because bot in most of the cases, bottom up and top down, both the approaches have the same time complexity. But in the bottom up approach, means the tabulation approach, we don't have recursive calls. So that is why it is little faster. So this all I have actually explained in the last video, in the last class. So you can check that out, okay? Huh. So we'll start from recursion of 0. I will start from recursion of 0, okay? And what I will do is, initially my capacity will be 4. So this is the index, understand? And this is the capacity, let's say. So now I am at the first index, right? So my first index, my recursion function will say, first thing is the not take case. Not take means I will not take this first index and I will move to the next index. So what will happen? When I will not take it, I will I will not take the first index, okay, and I will simply move to the next index 4, and my capacity will be as it is. In the other case, what will happen? In the other case, I'm taking this first element because its weight is less than the capacity. So what will happen? I will go to the next index. Now my capacity will become 0. Why capacity will become 0? Because I've taken a item of weight 4 and my value will be added by 1 because the value of that item was 1. Okay? Now here what will happen? When I'm at the first index, here I'm first not taking the first index. So if I'm not taking the first index, I'm simply going to the second index and capacity is as it is. And when I'm taking the first index, what will happen? Okay, so I cannot take the first index. Why? Because my capacity is 4 and the weight of the first index is 5. So take case cannot be have here. That is. Now here again 2 ways I will go. So first I'm planning to take the not take this last value. So if I will not take this last value, this first value, it will be recursion of 2 comma 0. And if I will even try to take the second value, I cannot take because my capacity has become 0. So in both the cases, take case is not possible. Now here first thing is I'm not taking the second index also, I'm moving forward. So second index भी हम नहीं ले रहा हूँ मैं, let's say. And next case will be that I'm taking this second index. So I'm adding this 3 in the answer and my weight will be reduced by 1. And here first case I'm not taking anything. So it will be 2 comma 0. Okay, ये 1 plus यहाँ पे रहेगा and I can not take. So at the last, my maximum weight that I can take will be either 1, because here it will be 0, it will be 0. So it will be either 1 or either 3. So maximum will be 3, that I will take this last item which is having 3 as the maximum value that we can take. Okay, so this is how we are solving this particular problem. Now if you want to memorize it, right, so is this recursive code clear to everyone? Is this recursive code make sense to all of you?
बोलिए, इज द रिकर्सिव कोड क्लियर टू एवरीवन? Great. So now let's memoize it. Okay. So how we can memoize it? So when we memorize something, we first of all see what variables are getting changed. So if you will see here that the value of I and the value of capacity is getting changed. I और capacity change हो रही है, right? तो मैं क्या करूंगा? I will create here a 2D. So this is a part of a 2D DP. Okay. So I will create a DP vector, a 2D DP vector. ठीक है? DP, where my first value will be n because I is ranging from 0 to n minus 1, and my second vector will be of size capacity plus 1, and initially I will initialize all of them with minus 1, right? अब मैं क्या करूंगा? I will pass dp here and I will have it here. ठीक है, I will have it here. अब हम क्या करेंगे कि before doing the recursion call, I will first check that if dp of I and capacity is not equal to minus 1. If dp of I and capacity is not minus 1, that means we have already calculated. So I will just return it. Else I will assign the answer to it. That's it. Now it will be a recursive code. Memoized code. So what happened? Okay, so we have to also pass dp here. Great. ठीक है. So let's submit it. Let's submit this code. It is submitted. ठीक है. So this is how we are memoizing our DP solution. Is it clear to everyone? Is the 0-1 knapsack clear? Yes, sure. I will explain the tabulation approach. Don't worry. Okay. So before explaining the tabulation approach, I will explain it. Don't worry. I will explain the tabulation approach also, and I will explain the space optimized tabulation approach also. Both I will explain. So don't worry on that part. Okay, that I will definitely explain. But before doing that, I wanted to just do one thing. I want to discuss this unbounded knapsack before doing that. Okay, because for solving unbounded knapsack, we have to just do a very small change in this knapsack code, and through that we can solve the unbounded knapsack code. A very small change we have to do. Let's see what. ठीक है, तो देखो हम लोग knapsack में क्या कर रहे हैं. knapsack में क्या हो रहा है कि हम एक आइटम को या तो लेते हैं या नहीं लेते हैं. 0-1 का मतलब ही क्या होता है? that either take a item or either not take item. ठीक है. But what happens in unbounded knapsack? In unbounded knapsack, we can take the same item again and again. So if you remember, the best item that we can take here is this one. So what I can do, if I want, I can take the same item again and again until my capacity gets ended. ठीक है. So that is what happens in case of unbounded knapsack. तो वो चीज हम लोग करेंगे कैसे? अच्छा, ये समझ में आएगा अनबाउंडेड knapsack क्या होता है. देखो फ्रैक्शनल knapsack क्या होता था. इन फ्रैक्शनल knapsack we can take the fractional part of the item also. Let's say if item is of 8 kg but I have just 4 kg remaining, I can take half of that. In 0-1 knapsack what happens? I cannot take fractional, but for each item either I can take it once or either I can not take it. So either take case or not take case. या तो लेना है नहीं लेना है, ये होता था. ठीक है. अनबाउंडेड में क्या होता है कि एक आइटम को आप मल्टीपल टाइम्स भी ले सकते हो, एक से ज्यादा बार भी ले सकते हो. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे पता है आपको. देखो, जब हमने 0-1 knapsack सॉल्व किया तो हमारा रिकर्सिव केस किस तरीके से था. तो मान लेते हैं हम लोग अभी अगर ith इंडेक्स पे हैं और हमारी कैपेसिटी हमें दी गई है, तो हमारा रिकर्सिव केस क्या था कि हम
अगर हम नॉट टेक केस कर रहे हैं तो हम क्या करते थे, तो हम सिंपली नेक्स्ट इंडेक्स पे चले जाते थे और हमारी कैपेसिटी सेम रहती थी। क्यों सेम रहती थी? बिकॉज हम लोग आइटम को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, राइट। बट टेक केस में क्या होता है, टेक केस में हम लोग उस आइटम की वैल्यू को टेक कर लेते हैं और नेक्स्ट एलिमेंट में चले जाते हैं, नेक्स्ट इंडेक्स में चले जाते हैं, और जो कैपेसिटी है उसमें से हम लोग उसका वेट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यही होता है ना। पहले इतना बताओ मुझे, दिस इज व्हाट हैपेंस इन 0-1 नैपसैक। ये बात सबको क्लियर है? ये बात सभी को क्लियर है? यस और नो? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब ये चीज हुई कैसे? देखो, हमने अगर एक आइटम को, मान लो हम भी ith वाले आइटम पे हैं, ठीक है। अगर मुझे ith वाले आइटम को नहीं लेना है तो मैं सिंपली i+1 वाले आइटम पे चला गया और मैंने कैपेसिटी में कोई चेंज नहीं आया और वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। बट अगर मैं उसको लेता हूं तो मैंने उसकी वैल्यू ऐड कर दी, कैपेसिटी सब्ट्रैक्ट हो गई और फिर मैं नेक्स्ट आइटम में चला गया, जो भी नेक्स्ट i+1 वाला आइटम था, ठीक है। मैं उस पर चला गया। अब अनबाउंडेड नैपसैक में क्या होगा, उसमें एक चीज ये होगी, जब हम नॉट टेक केस ले रहे हैं तो पक्की बात है कि हम लोग नेक्स्ट इंडेक्स में चले जाएंगे। बट जब हम लोग टेक केस कंसिडर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, जब हम लोग टेक केस को कंसिडर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि हम नेक्स्ट इंडेक्स पे नहीं जाएंगे, क्योंकि क्या पता हम उस सेम आइटम को दोबारा फिर से कंसिडर कर सकते हैं। बात समझे? हो सकता है कि हम उस सेम आइटम को दोबारा फिर से कंसिडर कर ले, इसलिए हम नेक्स्ट आइटम, अगर हम एक आइटम नहीं ले रहे फिर तो हम नेक्स्ट पे जाएंगे। बट अगर हम एक आइटम को कंसिडर कर रहे हैं, अगर वो हमारा टेक केस है, तो अब जरूरी नहीं है कि हम नेक्स्ट आइटम पे जाएं, हम उस सेम आइटम को दोबारा भी ले सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है सभी को? तो सिर्फ एक चेंज आएगा, बॉट नेमेसिस नोबावोंग, एवरीवन क्लियर है? तो सिर्फ एक चेंज आएगा कि हम इस सेम कोड को लिखेंगे यहां पर, ठीक है, सेम कोड को, बिल्कुल सेम कोड को लिखेंगे, और जब हम टेक केस कर रहे हैं तो हम नेक्स्ट इंडेक्स पे नहीं जाएंगे, हम चेक करेंगे कि हम सेम आइटम को फिर से ले सकते हैं कि नहीं। दैट्स इट, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना है, ये भी सेम ही रहेगा, everything will be same and just compile it. ठीक है, any number of times, unbounded means any number of times we can take, there is no limit bot. That is why when I'm taking an item, still I'm going to i+1, because I can take an item any number of times. Clear है? Clear है? Great. So we have solved the 0-1 knapsack also and unbounded knapsack also with just a one single change. ठीक है, अब हम एक काम करते हैं कि लेट्स डिस्कस द knapsack प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, सो आई थिंक पोस्ट डिस्कशन भी चल रहा है क्या? 30 मिनट्स बाद है, 2 डिफरेंट। ओके, ठीक है, क्लियर है? सो इज दिस मच क्लियर टू एवरीवन? कैन वी मूव टू द 0-1 knapsack like tabulation approach of this 0-1 knapsack? ठीक है, सो देखो, ऑब्वियसली गाइस, अंडरस्टैंडिंग एंड विजुअलाइजिंग द tabulation approach is always difficult, right? Because we have to do a lot of operations, we have to do multiple things. Understanding recursive approach is very easy, that is why we always start with the recursion plus memoization. But tabulation approach को समझना is very difficult, right? What if we get another error called quantity having the number of items, so that price and weight? हाँ, तो then what will happen कि just like you are maintaining the capacity ना, so you have to also maintain that how many times the item can be taken. Maybe you can have a loop, just like you are having the take array na bot. So here you can have a loop कि how many times you are taking the items. You can not just give it a free hand कि फिर से same recursion call चला दो, तो हम एक loop चला लेते,
कि हम उस आइटम को अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ दो केस ले रहे हैं, आइदर उसको 0 बार लो या उसको 1 बार लो, हम सिर्फ दो केस ले रहे हैं। उस केस में हम एक लूप चला लेते हैं कि उसको 0 बार लो, 1 टाइम लो, 2 टाइम लो, 3 टाइम लो, अप टू जितनी भी उसकी लिमिट है। समझ गए? तो हम वो चीज भी कर सकते हैं। तो वहां पर आई थिंक 3D DP आ जाएगी मे बी। ओके, तो वो और थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, राइट? चलो, तो अब समझते हैं टेबुलेशन अप्रोच इसकी, ठीक है, that how we can solve this problem using the tabulation approach. Let's discuss that. Let's discuss that. Okay. So I'm just getting some good test case or some this. Okay, this is not a photo. If it was an image, I can use the directly the image. But okay, I will then create it. So okay, to visualize it, I need to maybe first write down the code. Uh, okay, let's not write down the code. Let me first help you to visualize. Okay, so how we will do it using tabulation? Okay, देखो, so let's say that we have this same test case. It will be easy for us to understand. So this is the test case that we are having, where we are having the weight as 1, 2, 3, the profit as 10, 15, and 40, and the capacity as 6. Okay, so a screenshot, it will be very difficult maybe, but okay, let's try to take the screenshot only. Then I have to copy paste it to there. Let's see. ठीक है, cool, cool. So yeah, हो गया. So what we will do कि this is the DP array we will create. So what DP array we have created here now, you can see what was the size of that. We were having a DP array here which was having n rows and capacity plus 1 column, right? The same DP matrix this is also. It is also having, you can see, so it is having n plus 1 rows, 0, 1, 2, 3, and it is having this much of items. So capacity is 6. So you have taken a DP array of n plus 1 rows and capacity plus 1 columns, right? अब देखो हम क्या करेंगे यहाँ पर. What we will do is कि what this DP state will tell you. Let me first tell you that. Okay, so when I will say, let's say DP of xy, so what will DP of xy will represent? So DP of xy will represent us that when we have taken items up to x index, when we have taken items up to x index and capacity of y, means when I've taken items up to x index and capacity y, means weight up to y, then what is my maximum cost I am getting? That or maximum value, whatever you say, that is stored in the DP array. So you can see initially the zeroth row I'm making as 0. Why? Because if I have not taken any item, zeroth row means that I have not taken any item. So if you have not taken any item, by the way, here it is the one base indexing, right? So I can say x minus 1 index. So when x is 0, that means I have not taken any item. तो जब मैंने कोई आइटम नहीं कंसिडर किया है अपने नैपसैक में, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब सिंपल है कि
हमारा जो वैल्यू है वो 0 रहेगी। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या ये बेस केस क्लियर सबको कि अगर हमने एक भी आइटम नहीं लिया है तो वैल्यू 0 रहेगी? यस और नो? यस और नो? बॉट, नेमेसिस, महेश, ओके। अब देखो, अब आते हैं हम लोग एक एक करके, वी विल चेक एवरी आइटम कि अगर हम उस आइटम को लेते हैं और हमारी कैपेसिटी इतनी रहती है तो हमें कितना प्राइस मिलेगा। अब हमें ये निकालना है, ठीक है। तो हम आ गए मान लो हमारे पहले आइटम पे, तो हम आइटम्स को ऐसे नंबर कर लेते हैं 1 2 3 1 2 3, 1 बेस इंडेक्सिंग है यहाँ पर। तो ये क्या बोल रहे हैं, चलो अगर हम अपने पहले आइटम को लेते हैं और हमारी जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 0 है, तो देखो अगर आपकी कैपेसिटी 0 है और आप अपने पहले आइटम को देख रहे हो तो आप उसे ले ही नहीं सकते हो, क्योंकि पहले आइटम की वेट है 1, आपकी कैपेसिटी है 0, तो एक तरीके से 0 कैपेसिटी के लिए भी 0 0 होगा, ठीक है। ये देखो वो भी 0 0 ही आ रहा होगा नीचे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट कि मान लो आपकी, अब आप आ गए कि आपके पास पहला आइटम है और आपकी कैपेसिटी हो गई 1। अब देखो जब आपकी कैपेसिटी हो गई 1 तो फिर आप इस आइटम को ले सकते हो 10 को, तो आपने उसे ले लिया। कैपेसिटी 2 हो गई तब भी आप 10 को ले सकते हो, 3 भी तब भी, तो पूरा 10 10 10 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कैपेसिटी कुछ भी हो 1 से लेके 6 तक, अगर आपके पास पहला आइटम है तो आप उसको ले सकते हो, वैल्यू 10 हो जाएगी। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? ये देखो, इज दिस मच क्लियर? चलो बढ़िया। अब आपके पास सेकेंड आइटम भी आ चुका है, मतलब ये वाला आइटम भी आपके पास आ चुका है, दोनों है, ठीक है। अब देखो, अब अगर आपकी कैपेसिटी 0 है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? तो आप बोलोगे भाई कि ठीक है 0 रहेगा। अब आपकी कैपेसिटी हो गई 1, तो अगर आपकी कैपेसिटी हो गई 1 तो देखो क्या कर रहे हैं, तो वैल्यू 10 है। 10 क्यों है? क्योंकि अगर आपकी कैपेसिटी 1 है तो या तो आप करंट आइटम को लोगे, बट आप करंट आइटम को नहीं ले सकते हो क्योंकि उसकी वेट है 2। तो अगर आप करंट आइटम को नहीं ले सकते हो तो आप बोलोगे भाई इसके पिछले आइटम का जो कैपेसिटी थी ना वो ले लो, तो वो हो जाएगी 10। तो मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूं कि मान लेते हैं कि आप ith रो पे और wth कैपेसिटी पे थे, ठीक है, ठीक है। तो देखो अगर अगर जो करंट वेट है आपका, जो करंट वेट है आपका, जो कि i-1 होगा बेसिकली, वो अगर इस w से बड़ा है, जैसे कि देखो W ये है, W मतलब आई एम रेफरिंग टू ये जो वेट वाली जो एरे है ये W है और ये आपकी I है। तो ये बोल रहा हूं मैं अभी सेकेंड इंडेक्स पे हूं, ठीक है, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं। इसका जो वेट है ये हमारी कैपेसिटी से, जो 1 हमारी कैपेसिटी थी उससे बड़ा है इसका वेट, तो हम इस आइटम को तो नहीं ले सकते हैं। अब वो बोल रहा है अगर इस आइटम को नहीं ले सकते हो तो ये बताओ कि इसके पिछले आइटम को ले सकते थे। हाँ, इसके पिछले आइटम में जो कैपेसिटी थी वो थी कितनी? 10। तो हम क्या करेंगे, तो हम लिख देंगे डीपी ऑफ जो आई और डब्ल्यू हो जाएगा ना, वो सिंपली डीपी ऑफ i-1 डब्ल्यू हो जाएगा, मतलब हम पिछले वाले आइटम की कैपेसिटी को कंसिडर कर लेंगे। सिंपल है, ठीक है। बट अगर ऐसा नहीं है, मान लो कि जो इसका वेट है वो ग्रेटर नहीं है कैपेसिटी, मान लेते हैं कैपेसिटी हो गई 2 और इसका वेट भी है 2, तो हम क्या करेंगे, तो हम दोनों केस लेंगे। तो हम लिखेंगे कि डीपी ऑफ आई डब्ल्यू है, एक केस तो ये हो जाएगा कि हम पीछे वाले को ले लेंगे 10 को, पर हम दोनों केस लेंगे। एक होगा नॉट टेक केस जिसमें हम सीधे पीछे वाले आइटम से सेम कैपेसिटी को ले रहे होंगे, और एक केस हो जाएगा समझना क्योंकि इसकी जो वेट है वो कैपेसिटी से इक्वल है, तो हम इस करंट आइटम का प्रॉफिट ले सकते हैं, मतलब हम प्रॉफिट ऑफ आई ले सकते हैं। और प्लस जब हमने 2 किलो की कैपेसिटी ले ली है तो हम 2 माइनस 2 पिछले आइटम की 0 कैपेसिटी तक हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, मतलब वी कैन टेक डीपी ऑफ i-1
W माइनस वेट ऑफ द करंट आइटम। तो यहां भी यार ये I माइनस 1 हो जाएगा। ओके गाइस, गिव मी 1 मिनट। या सॉरी गाइस, ठीक है। तो 2 केसेस है, देखो समझना बात को। तो मैंने बोला कैपेसिटी 2 किलो की है, ठीक है, कैपेसिटी 2 किलो की है। तो 2 केस है, या तो आप करंट वाले आइटम को 2 किलो ले लो। तो अगर आप करंट आइटम को 2 किलो ले लोगे तो आप पिछले आइटम तक कितने किलो ले सकते हो? 0 किलो ले सकते हो। तो पिछले 0 का था 0, करंट आइटम का 15 था, तो मैक्स हो गया 15। सेम जब आपकी कैपेसिटी हो गई 3, तो मतलब आप करंट आइटम को 2 किलो ले सकते हो जो कि है 15, और पिछले को 1 किलो ले सकते हो। और अब बताओ पिछले आइटम तक 1 किलो का प्रॉफिट कितना था? 1 किलो का प्रॉफिट कितना था? 25, 10 था ना, तो 10 प्लस 15 25 हो जाएगा, और ये पूरा 25 ही चलेगा। यू कैन टेक, ठीक है। एंड सेम फॉर थर्ड आइटम। आप थर्ड आइटम कब ले सकते हो? तो अगर आप यहां पे ले नहीं सकते थर्ड आइटम, तो यहां पे 10 रहेगा, यहां 15, यहां पे आप थर्ड आइटम ले सकते हो जिसकी वैल्यू है 40। अब यहां पे आप थर्ड आइटम भी ले सकते हो और 4 माइनस 3 फर्स्ट पिछले आइटम का 1 किलो भी ले सकते हो। तो मतलब 40 प्लस 10 50 हो जाएगा। और यहां पे आप इसको प्लस ये 15 ले सकते हो 55, और यहां पे हो जाएगा 65। तो फाइनल जो आउटपुट है वो ये वाला आ जाएगा 65 एज द आंसर। समझे? और ये हमारा पूरा कोड है। बॉट, नेमेसिस, नोपावोंग, पार्थ, कार्तिक, महेश, guys, please hit the like button if you guys are here. Did you understood this or not? ठीक है। तो what I will do, the same thing that we discussed. Let's close this recursive code. Here I will take the size as n plus 1. Now for every row I will go. So 0th row will be 0 only. So I will first make all the row as 0, right? Now what I will do is key here. I am here. What I'm doing is key. I have to start from the first row. 0 will be 0 only, right? So I will start from the first row, go up to the nth row. ठीक है? And same for the capacity. Like this. Okay. Now if the weight of the current item is greater than the capacity, that means dp of iw will be just dp of I minus 1w as written here. Else it will be the max of, this is the not take case, comma take case will be I minus 1 w minus w I minus 1 and plus prices of I minus 1. That's it. ठीक है? At the last return dp of n and w. Okay, not prices. Here we have value, not prices. W was not declared in the scope. Okay. Done. Okay.
राइट? मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू? अब हम इसको करेंगे स्पेस ऑप्टिमाइज्ड। अब लोग अभिनव स्पेस ऑप्टिमाइज कैसे होगा? देखो, अगर आप एक चीज देखो, तो हम जब डीपी ऑफ आई को कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब जब हम ith रो की वैल्यू निकाल रहे हैं, जब हम ith रो की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हमें सिर्फ i माइनस 1th रो की वैल्यू चाहिए। मीन्स हमें उसके पिछले वाले रो की वैल्यू चाहिए। हमें जब हम लेट्स से जब हमने इसकी वैल्यू निकाली थी इस वाले की, तो हम देख, मान लो हमने अगर इसका 2 किलो लिया है, तो हम देखेंगे लास्ट वाले का अगर इसमें कितना तो कितना होगा, राइट? तो हम अगर हम यहाँ पे कोड में देखो, हम जब डीपी ऑफ आई की वैल्यू निकाल, तो हम i माइनस 1 को यूज कर रहे हैं। तो क्या जरूरत है पूरी n साइज का रो लेने का? सिर्फ लास्ट रो और करंट रो से भी काम चल जाएगा, ठीक है? तो वो हम लोग कैसे करते हैं, ये देखो, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कैसे होता है, कहां गया? तो वहां पर हम डीपी ऑफ आई वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको हम लेते ही नहीं है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, वी जस्ट टेक अ वैल्यू ऑफ कैपेसिटी प्लस 1। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर ये सेम कोड होता है, राइट, तो हमें, अच्छा पहले तो बताओ, ये वाला समझ में आ गया ना, जहां पर ये पूरा 2D डीपी है, ये आ गया है। तो फिर मैं बताता हूं आपको कि हम लोग स्पेस ऑप्टिमाइज कैसे कर लेते हैं। बॉट एवरीवन, ठीक है? चलो, तो अब आते हैं कि हम लोग सिर्फ एक सिंगल एरे से, ऐसा हर क्वेश्चन में नहीं होता है, नैपसैक में स्पेसिफिकली हम लोग कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है? ठीक है, ठीक है, चलो बढ़िया। तो यार अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। उसमें हम लोग क्या करेंगे कि मैं इसको हटाता नहीं हूं, मैं न्यू पेज ले लेता हूं। और एक काम करते हैं कि हम क्या करेंगे कि मैं इस न्यू वाली इमेज का ना, इस इमेज को मैं वो कर देता हूं, हमें अब इस इमेज का सिर्फ इतना ही पोर्शन चाहिए, सिर्फ एक, ठीक है? हमें पूरी इमेज नहीं चाहिए। अब लोग अभिनव इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको बताता हूं, ठीक है? जैसे कि क्या करेंगे, हम सिर्फ एक वेक्टर लेंगे ऑफ कैपेसिटी प्लस 1, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है कि जब जीरो कैपेसिटी है तब तो जीरो ही रहेगा, राइट? अब देखो क्या करेंगे हम लोग कि हम यहां पर तो सेम ही चीज कर रहे हैं, मैं साथ साथ आपको शो कर देता हूं। हम लूप सबकी चला रहे हैं, बट हम कंसिडर उसी एलिमेंट करें जिसको हम टेक कर रहे हैं। अगर टेक नहीं है तो पिछले की वैल्यू रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, हमने पहले हम लोग फर्स्ट एलिमेंट के पास गए, ये आई थिंक 1 बेस इंडेक्सिंग यहां भी हो रही है, राइट? दिस इज 1 2 3 1 2 3। तो पहले इस एलिमेंट पे गए, ठीक है? अब ये क्या बोल रहा है कि क्या हम इस एलिमेंट को वेट 1 के लिए ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो अगर हम इसको वेट 1 के लिए लेंगे तो कितना आपका प्रॉफिट आएगा? प्रॉफिट आएगा 10। तो इसको 10 कर दिया, ठीक है? फिर यहां पर आए, सॉरी, फिर सेकंड पे गए, क्या यहां पे ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। प्रॉफिट आया 10, फिर 10, फिर 10, फिर 10, फिर 10। तो इस फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग इन सारे कैपेसिटी के लिए ले सकते हैं, ठीक? आई विल टेक योर क्वेश्चन। हम सेकेंड एलिमेंट पे गए, ठीक है? अब जो सेकेंड एलिमेंट है हम उसको देखेंगे, क्या हम उसे फर्स्ट कैपेसिटी ले सकते हैं? नहीं ले सकते।
तो नहीं ले सकते, तो एज इट इज रहेगा, आगे बढ़ जाओ। क्या हम उसे सेकंड कैपेसिटी के लिए ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। और अगर लेंगे इसको हम सेकंड कैपेसिटी के लिए, तो कितना आएगा कॉस्ट? तो कॉस्ट आएगा 15 प्लस 0 कैपेसिटी, तो 15 आएगा, जो कि मैक्सिमम है। अब क्या हम इसको थर्ड के लिए ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। ये 15 हो जाएगा, 15 15 15 और 15। अब आएगा, और नहीं वेट, 15 नहीं, जब इसको हम थर्ड के लिए लेंगे ना, तो हम इसका 15 ले सकते हैं, और ये 3 कैपेसिटी है, वेट 2 है, तो ये फर्स्ट वाले का 10 भी ले सकते हैं। तो बेसिकली जो काम हम लोग एक मैट्रिक्स में कर रहे थे, सेम काम यहां एक सिंगल एरे में भी हो सकता है, लाइक दिस। तो इसमें हम लोग मोस्टली पीसेस आइटरेट करते हैं। इफ यू विल ड्राई रन यू विल गेट, ठीक है। वी स्टार्ट फ्रॉम द बैक टू चेक, तो आई विल डू द सेम। Okay, this thing you will get easily here, you can see here, right? And then I can maybe write the same part. कि अगर weight less है capacity के, then I can take, and this is your, okay, it is let me write dp of w is max of dp of w comma dp of w comma wt of I minus 1 plus value of I minus 1. That's it. ठीक है. So this is space optimized. तुमने क्या किया? If you see, we solved the knapsack problem in all the possible concepts, right? So first, obviously, we understood the problem statement, that what is knapsack problem, we discussed that. Then we discussed the approach of the problem, the logic, right? Then we first solved it using recursion. Ab using recursion, the time complexity will be order of 2 to the power n, and space complexity, if you will not consider the recursive space, it will be constant, right? Why 2 to the power n? Because you are checking every possible combination. Yeah, exactly. It's great, right? Now, then we memoized it. So in memoization, what we did, the time complexity became order of n into w. W means capacity. But space complexity also became n into w. Right? Then we written in the tabulation manner. Tabulation manner. In tabulation also, time complexity was order of n into w, and space complexity was order of n into w. Same. Then we space optimized it. Right? Where time complexity was order of n into w, but space complexity was order of w only. Right? So we solved all the possible ways of solving this particular problem. Clear? Hai? So what was, can you explain the same problem test case you solved using recursive approach, or I will rewatch your explanation and try to understand after the session, because this program profit. It's the same thing, na bot. It's just the name of the variable is different bot. Okay, profit price is same ही है, बस name अलग है, ठीक है. Approach is same. Why I have not taken that particular? Because वो बहुत लंबा test case था यार. So if I will dry run on this long test case, it will take a lot of time. So I prefer the smaller one, but it is same. There it's prices, here it's profit, somewhere it's value. But things are exactly same. Okay, there is no difference. Okay, you can even rewatch the video. It's not something you will not have a problem. Okay. Great. So guys, should we move forward to the next problems?
ओके ग्रेट. सो यार नेक्स्ट डिस्कस करते. तो अभी हमारा जो आज का एजेंडा था, वन मेजर थिंग नैप सैक इज डन, ठीक है. बट नाउ लेट्स हैव सम मोर प्रॉब्लम्स ऑन अ 2D डीपी. ओके, सो एक तो प्रॉब्लम है, एज आई सेड यू, target sum was one problem. Yeah, it is live at 8:30, so I know people will go there maybe. So you can see, ठीक है. And one is subset sum. So these are two problems here. Let's take both the problems, okay, and let's try to solve both of them. Both are the problems of 2D DP. Maybe some of them are of one. This is a 1D DP problem maybe. So let's solve both the problems, okay, and then we can maybe have a small break before going to the LCS, longest common subsequence, and the longest ingredient subsequence. Before going to that, we will have the break. But yeah, before that, let's solve these both the problems. First is target sum, and next is subset sum problem. Okay. So let's see what the problem are. So I think it might be started. So guys, please hit the like button, yaar. है ना? Hit the like button. We are having this. Great. Uh, just checking one thing. ठीक है, बढ़िया यार. Let's move forward. Okay. So this is a very 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 good problem. Okay, and this is again a problem specifically of DP, dynamic programming. ठीक है. Here, before moving forward, I just wanted to make a small announcement that if you guys don't know about the 390 challenge, so we at GFG have started a 390 challenge for you guys. So what happens in this challenge, that if you will buy any course on Geeks for Geeks, and if you will complete the 90% of that course in 90 days, so let's say 90 days mean 3 month का time होता है, तो अगर आप 3 महीनों में 90 दिनों में अगर आप 90% उस कोर्स को कंप्लीट कर देते हो, उसे वॉच कर लेते हो, उसको पढ़ लेते हो, तो आपको उस कोर्स का 90% अमाउंट वापस मिल जाएगा. मतलब अराउंड आपको पूरा ही पैसा वापस मिलने वाला है, राइट. सिर्फ 10% आपको लगेगा. तो एक तरीके से आपको एक कोर्स सिर्फ 10% रुपए का पड़ेगा. अगर एक कोर्स 1,000 रुपए का है तो आपको सिर्फ 100 रुपए का पड़ेगा अगर आप 90% कोर्स 90 डेज में कंप्लीट कर लेते हो. ठीक है. तो यार दिस वाज अ 390 चैलेंज आई वांटेड टू से. Let's solve the next problem, guys, which is the target sum. ठीक है. So let's first understand what the problem is. So the problem says that given an array of integers a of length n and an integer target. तो आपको एक इंटीजर दे रखी है a length a of length n, ठीक है, जिसमें एक इंटीजर है टारगेट. ठीक है. अब आपको क्या करना है, आपको बताना है कि you want to build an expression out of a by adding one of the symbol plus and minus before each integer a and then concatenate all the integers. For example, if arr is equal to 2 comma 1, then either you can make it 2 plus 1, 2 minus 1, minus 2 plus 1, minus 2 minus 1. I will tell you. Okay. And by doing that, you have to find the number of different expressions that can build, which evaluates to target and return your answer with modulo 10 to the power 9 plus 7. So let me tell you what is happening. Okay. तो आपके पास एक array दे रखी हुई है. For example, the array is like this. What the question says is that you are having an array, let's say like this.
ठीक है. Okay, again it became a very large one. Let's make a smaller one so that we can actually have better. तो इसमें हाँ we can have. And let's say that our target is 8. ठीक है. So what you have to find is, you have to find that is there any way so that we can put plus and minus symbols in this particular array so that we can have the final sum as 8. And you have to tell how many multiple expressions can be created like that. For example, if you will have 8, then plus 1, then minus 3, plus 2. So you will see that output will be 8. This is one possible expression. Second will be 8 minus 1 plus 3 minus 2. This will also be 8, right? So you have to find all the possible combinations where 8 is possible and you have to count them. ठीक है? Is the problem clear? Is the problem clear? There can be multiple others. Let's say एक ये भी हो सकता है, minus 8 plus 1 plus 3 minus 2. Okay. In this case, output will be minus 7. ठीक है? So it will not be possible here. So we have to use you have to use all the numbers. So basically, we have to use all the numbers of the array. Some numbers we have to take as a positive, some as the negative. तो बोल रहे हैं ना, either plus, either minus. So some of the numbers you have to take as the positive number, some you have to take as the negative number, so that the final sum, the final value of the expression is equal to the target. Make sense? ग्रेट. चलो बढ़िया. ठीक है. अब देखो हम सॉल्व कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को. हाउ विल वी सॉल्व इट, हाउ डू वी सॉल्व इट. तो हम एज वी नो, जैसे बोल रहे हैं, विल फाइंड ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस. हम क्या करेंगे, हम सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस निकालेंगे. फॉर दिस 1 मिनट देना मुझे. हाँ, तो वी विल फाइंड ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. तो हम कैसे करेंगे, जैसे ये वाली एरे है. ठीक है. तो हम इनिशियली हम स्टार्ट करेंगे 0 से. तो इनिशियली हमारा सम रहेगा 0. तो हमारी ये इंडेक्सेस हैं. ठीक है. तो ये हमारा लेट्स से आई है. तो हम इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट करेंगे. ठीक है. अब मान लो हम 0 इसमें 0 पे हैं. सो वी हैव 2 ऑप्शंस ऑन ईच इंडेक्स. टेक एंड नंबर. Exactly. Or we can say we have 2 options, either add that number in the sum or either subtract that number from the sum. Okay, we have 2 options. Make sense? Okay, great. I think negative भी लेना पड़ेगा. हाँ ठीक है. चलो बढ़िया. ठीक है. अब देखो हम क्या करेंगे. लेट्स सी वी हैव द 0 इंडेक्स. तो वी हैव 2 ऑप्शंस. Either you will take this 0 index. Exactly. So this is either you will take this 8 as positive or negative. So I am saying if you will take it as negative, you will move to the first index, it will be minus 8. If you will take it as positive, again you will move to the next number, it will be plus 8. Right. Same here, it's 1. So for 1 also, it will be either minus 1 plus next index. So means minus 8 minus 1. Or it will be minus 8 plus 1 plus the next index. Now here, it will be minus 8 minus 1 minus 3 plus the next index, or minus 8 minus 1 plus 3 plus the next index. And for the last index, it will be minus 8 minus 1 minus 3 plus 2, or minus 8 minus 1 minus 3 minus 2. So means we will check for all the possible combinations. We will check for all the possible combinations for this particular case. तो क्या करेंगे? Let's write the recursive code. Then maybe you will understand more clearly.
So I will say it's long, ठीक है. So recursion. So I'm currently, let's say, at the ith index of the array. Let's name this array as ARR. So I will take all of these things, the size of the array and the target. Okay. Now what I will do, and I will take one more thing, the sum, means the current sum that we are having. जो current sum है हमारा, हम उसे भी यहाँ पे consider कर रहे होंगे. ठीक है, बढ़िया. हमें sum के लिए देखना, because I think the numbers can be negative also. I just wanted to see if it's the same question I'm referring to. ठीक है, सॉल्व करते हैं, होना तो वही चाहिए. ठीक है, चलो बढ़िया. नाउ व्हाट विल हैपन, देखो, इफ आई हैज रीच्ड n, देखो, if I has reached n means you have taken all the numbers. I has reached n means if you have taken all the numbers and your sum is also equal to target. If you have reached the end and your sum is equal to target, what does it mean? That means that this particular combination, this particular expression is valid and you will return 1. Return 1 means that you got one valid expression. So here, when I will get a valid expression with the sum 8, I will return 1. But if you got a sum, else we will move forward basically, because if sum is greater, later it can be become less. हाँ, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. बट या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि if you have reached the end, so if your sum is equal to the target, then you will return 1, else you will return 0. ठीक है, great. Now the recursive call. So recursive call क्या होगी? Recursive call क्या होगी कि either you will take the positive case. Positive case means that in the recursion you are moving to the next index, and the current index, the current value, you are taking as positive. So you are adding it in the sum, and then you are making the call. So first case is where you are taking the current number as positive, and second case will be that you are taking your current number as negative. तो पहला केस क्या है कि आपने करंट नंबर को पॉजिटिव ले लिया and you are moving to the next index. Here it's negative and you are moving to the next index. Right? ये कर रहे हैं. And at the last I will return. अगर पॉजिटिव से आपको 1 मिलता है, मतलब अगर पॉजिटिव वाला केस में आपको फाइनली टारगेट मिल रहा है तो ऐड कर लो, सेम नेगेटिव वाले केस को ऐड कर लो, उसको रिटर्न कर दो. ठीक है, तो अगर हम यहां पे लिखें तो it will be, let's take this also as long. So it will be return recursion of 0 comma initially sum will be 0 target. So this is the recursive code that we've written. Obviously, okay, it is not giving tail. Even the recursive code is why it is running. Let me see. Okay, so the length of the array is very small, so the recursive case is also running, but we will optimize it, not a problem, right? So does it make sense? Is it clear to everyone? क्या ये recursive code सबको clear है? Or should I explain it again? Do let me know. Clear, right? Now what I will do is I want to memorize it. ठीक है? अब again, memorization, what we do? We check what variables are getting changed. So you can see that I and sum is getting changed, right? So, but the sum है, this sum is very important.
because some can be negative also and some can be positive also. There will be a very huge difference in the sum. एक चीज और भी थी यार कि we have to take the answer in modulo. So I will take here a int mod 10 to the power 9 plus 7. By the way, it worked before without taking mod, but they asked me to take mod, so I will be taking the mod here. Okay, while adding. So that is the one thing. Okay. Now what they are saying is key in this case you have to memorize. Okay. So if you have to memorize it, first thing will be simply taking the vector dp of size n. But what will be the size of the second vector? That we are still confused because this is sum hai na, this sum that can also be negative and that can also be positive. तो जैसे यहाँ पे क्या है, अगर मान लो हमने सारे नंबर को नेगेटिव ले लिया, then it will be -14 या +14. So the sum will range between the negative and the positive of the array, right? So what I will do, I will first of all find the sum of the array. I think ये सारे नंबर तो आपके पॉजिटिव ही होने चाहिए. हाँ, so I will first of all find the total elements sum in the array. ठीक है. Now what will happen? This sum can go to max the negative of the whole total or the positive of the whole total. उससे आगे पीछे नहीं आ सकता, right? तो हम क्या करेंगे? What I will do is कि this size which I will create, this vector, this I will create of size 2 into total, I think +1 और +5 कर लूं तो कोई और प्रॉब्लम ना हो. +5 ठीक है. हाँ, राइट. और हम यहाँ पे क्या करेंगे कि when I will check it, so I will say, so I will first pass here the total also. And the dp. So dp and total both will be passed. Total is there and dp is there. Both I will pass, right? So I will check if dp of I and sum plus total, because sum can go to the negative of total. So I'm adding total there so that negative becomes positive, because the least value of sum will be minus total. So it will become 0. If it is not equal to -1, so return it. Else assign the value. ठीक है. This is the case. So we have memorized this code also. Okay. By the way, that was also working in this case, right? But this has taken less time. Okay. So let's take this also as a assignment I'm giving to you, that you have to try solving this problem as tabulation. Okay. Take that as an assignment, that you have to solve the same problem, this particular problem, as tabulation. Okay. Take that as an assignment to you guys. Okay. Great. चलो यार, तो ये हो गया. Now next comes is the subset sum problem, and after that we'll be going forward with the LIS and LCS. So longest common subsequence and longest increasing subsequence we have to do. Before that, let's solve this problem, subset sum problem. And after that, if you guys will say, I can also give a break, even because it's around 2 hours. I think we started at 7 and it's around 9, right?
So we'll take a break of also some 5-10 minutes, okay? And then we'll come back and solve the remaining thing, right? Great. So what we are saying here is, we are saying that a subset sum problem. What is this subset sum problem? Given an array of positive integers ARR and a value target, determine if there is a subset of the given sum with sum equal to the target. तो आपसे क्या बोला जा रहा है? आपसे लोग बोल रहे हैं कि आपके पास एक एरे है, आपके पास एक एरे है, ठीक है, और आपके पास एक टारगेट है. अब आपको यह बताना है कि क्या इस एरे में कोई एक ऐसा सबसेट है, मतलब क्या इस एरे में कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनका सम इस टारगेट के इक्वल है. बताइए, हैं कुछ नंबर्स इस एरे में जिसका सम टारगेट के इक्वल है? कौन कौन से नंबर्स हैं? कौन से नंबर्स हैं इस एरे में जिसका सम इस टारगेट के इक्वल है? टेल मी. एग्जैक्टली, देयर आर मल्टीपल वेज, राइट? एक तो हो गया आप 3 + 4 + 2 कर लो तो भी 9 आएगा, या आप 4 + 5 कर लो तो भी 9 आएगा. तो आपको बताना है सिर्फ, आई थिंक यस और नो, या आपको सिर्फ यस या नो बताना है कि भाई ऐसा सबसेट प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है. दैट्स इट. आपको सिर्फ इतना ही बताना है. तो ये केस भी जो है, यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे? टेक एंड नॉट टेक केस का ही यूज करेंगे. यहां पर भी हम लोग टेक एंड नॉट टेक केस का यूज कर रहे होंगे. किस तरीके से करेंगे? देखो, तो हमें यहां भी करना ना भाई, सबसेट का मतलब क्या होता है? सबसेट मतलब होता है कि हमें इस एरे में से कुछ प्रॉब्लम को कंसिडर करना है. ठीक है, 2 3 5 तो 10 हो जाएगा वैसे, बट 2 3 4 हो जाएगा. तो सबसेट का मतलब होता है कि हमें इस एरे में से कुछ एलिमेंट्स को कंसिडर करना है. ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? तो मतलब हमें कुछ एलिमेंट्स को लेना है, कुछ एलिमेंट्स को नहीं लेना है. ये तो मतलब होता है ना कि हमें कुछ एलिमेंट्स को कंसिडर करना है, कुछ एलिमेंट्स को कंसिडर नहीं करना है. तो वो चीज कैसे करेंगे? देखो, तो हम स्टार्ट करेंगे वही 0 इंडेक्स से. 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे. पहला केस क्या आएगा कि हमने इस 3 को नहीं लिया तो हमारा सम 0 रहा और हम आगे बढ़ गए. दूसरा केस, हमने इसको ले लिया और हम आगे बढ़ गए. फिर हमने 34 को नहीं लिया, हम नेक्स्ट इंडेक्स पे चले गए, या हमने 34 को ले लिया और हम नेक्स्ट इंडेक्स पे चले गए. यहां पर हमने 34 को ले लिया, नहीं लिया तो नेक्स्ट पे चले गए, और अगर हमने उसको ले लिया तो नेक्स्ट पे चले गए. तो वही सेम यहां भी क्या आ गया? यहां पे आपका टेक एंड नॉट टेक केस है. जिस तरीके से आपने नैपसैक में किया था सेम है, बस यहां पे कोई कैपेसिटी नहीं, यहां पे टारगेट है. सेम है, देखो बिल्कुल सेम है. नैपसैक में क्या था कि एक वैल्यू था, एक कैपेसिटी थी, हमें आइटम्स को लेना था जब तक वो कैपेसिटी के ऊपर ना जाए. यहां भी सेम है, हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, हमें ये बताना है कि हम क्या उनमें से कुछ एलिमेंट ले सकते हैं जिनका सम टारगेट के इक्वल हो. कैसे सॉल्व करेंगे? लेट्स सी. तो हम क्या करेंगे कि हम बोलेंगे यहां पर बुलियन है रिकर्जन. मान लो हम करंट ith एलिमेंट पे हैं तो हमने वो ले लिया. ठीक है, तो पहले तो एक साइज भी ले लेते हैं यहां पर. तो अगर आपका i लास्ट इंडेक्स तक पहुंच चुका है, मान लो आप आइट्रेट करते करते लास्ट इंडेक्स तक पहुंच गए, ठीक है, तो अच्छा आपको एक सम भी लेना पड़ेगा. ठीक है, तो अगर आप आइट्रेट करते करते लास्ट इंडेक्स तक पहुंच गए हो, तो अगर आपका सम टारगेट के इक्वल है, ठीक है, फिर तो ठीक है, रिटर्न ट्रू कर दो, और अगर नहीं है तो आप कर दो रिटर्न फॉल्स. ये होगी एक चीज. अब देखो यहां पर जो एलिमेंट्स है वो पॉजिटिव ही हैं, तो अगर किसी भी केस में सम जो है वो टारगेट से बड़ा आता है, तो मतलब अब वो सम कभी भी टारगेट से छोटा नहीं हो सकता है, बिकॉज नेगेटिव एलिमेंट्स नहीं है. तो उस केस में भी आपका
आंसर फॉल्स हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा बेस केस। अब एग्जैक्टली हाँ, we can do that. So you are saying we can simply do right here. Yes, we can do. Okay. Now recursive case क्या होगा? What will be recursive case? Recursive case will be that I will first have the take case. Take case means that I will move to the next number and the current number ARR of I am adding in my sum. तो take case क्या हो गया? That I am moving to the next number and current number I am adding in my sum. ठीक है? And what is the not take case? Not take case means I am moving to the next number and I am not taking the current number. ठीक है? Now if take case or not take case, any of that is returning true, means your answer will be true, else false. मतलब अगर टेक केस मतलब अगर आप ये एलिमेंट को टेक करने से आपका आंसर ट्रू आया तो भी ठीक है, नहीं तो भी ठीक है, या आप डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हो, रिटर्न टेक और नॉट टेक, सिंपल। ठीक है, सो हियर यू कैन हैव रिटर्न रिकर्जन ऑफ 0,0, n will be ARR of length, so n comma ARR comma target. I was writing that Java. Yeah. So it will be solved. But this will be a recursive code. I think here it will be giving runtime exceeded, right? Okay. By mistake, courses is open. Okay. If I've opened courses, you can see the 390 challenge, guys. If you guys, you can see multiple people are having the refund of thousands of rupees. You can see. So if you will buy any course on Geeks for Geeks, channel, if you will buy any course on Geeks for Geeks website, and if you complete that course in 90 days, if you complete the 90% of the course in 90 days, then you will get the 90% of the fee refund, right? So maybe you guys can check this out. We have a lot of courses for fundamental, we have a lot of self-placed courses, our GFG self-placed course, complete interview preparation we have. We have a lot of courses. You can check that out. So let's come back. Yeah. So this is giving runtime error. Okay. Now what I can do today? So what we can do now is key we have to memorize it. Ab here memorization is similar to the previous question memorization. Exactly same. You can see. Okay. Just the thing is here there is no negative, so I can take it at max up to total only. There's no need for total plus 5 and 2 into total plus 5, or even I can have from here at what's the main, but that will also be fine. Okay. So this is the thing, I can just pass the DP here. So I will say if DP of I and sum is not equal to -1, return DP of I sum. ठीक है. So okay, one thing I missed, at else assign the value also. Okay, ये क्यों time limit exceed कर रहा है भाई? Why this is also exceeding the time limit?
Yeah, can anyone tell me why this is also exceeding the time limit? Say if not equal to -1, where is sign angles, where is sign negative? Acha, I think this first of all this should be a boolean. But it's fine, -1 and ठीक है. I think we need to solve it with the tabulation approach. Then it will be better, right? So let's write a tabulation approach for the same. Okay. So what we will do in the tabulation approach is we have the target, right? We have the target. I think we have to go to target only. Yeah. So we have the target. So I will first take all the elements. That is not required because in previous question we were having negative sum. Na here we don't have negative sum. Okay. Let's see. Because they were negative sum, so I was making that negative sum to positive. Here we can use tabular approach. Exactly, no problem. So let's use that. Let's set a tabular approach. So again, the same thing we will do. That we will first of all go through all the elements one by one. So from 0 till n I will go. Okay. Now what I will do, I will go through all the that target also, or I will say the sum. So what will be the DP state here? So the DP state here will be, let me try to visualize. So DP state here will be, if I will say DP of I and J, that means if we have taken elements up to ith index, okay, with a sum of J, then is it possible or not? Wait. So here it will be little different from how we do it in the previous case. Let me build that DP matrix and explain you. So where can I find this? Okay, maybe there must be some article for this also. Subset sum problem. Yeah. So here you must be getting that matrix to explain the. Yeah, that's it. I know, but I just wanted to explain to the DP like matrix and all. Okay, here also we don't have. I think. Okay, we do not have any of the diagram. I think. Memorize it's there. In the bottom of approach, we are not having it, right? Okay, so here also we are not having it. So, so what it will tell me that if we are having till ith index, if we are having just till ith index, right, where j is the sum, then is the answer possible or not? So there will be two ways. There will be two ways. You can see here also they have explained that if the value is greater than j, means j is the current target where we are thinking. Means if j is that I'm saying if j is the target, I'm saying if j is the target and we are currently at the ith index, then whether the answer is possible or not, that is what they are saying. So I'm saying if the value is greater than target, then I can even not have it because value is greater. But if value is not greater, then either not take that case or either take that case where the target will be decreased. So let me first write the code. So I think here we have to again do zero based indexing only. So I will say if array of I minus 1 is greater than the target,
then dp of I and s will be dp of I minus 1 and s, the same target, right? And it will be a boolean dp actually. Else dp of I will be previous or s minus the current. That's it. Okay. So let's write dp of n and target at the last. This will be, I think, initially true. dp of 0 0 will be true, I believe, because when sum is 0 it will be nothing, but I think that will not be used. Let's see क्या हो गया. N is not declared in the scope. I hope it will be done. Okay. I think we are doing some mistake. Let me see that we have done right. Okay, the whole first, uh, right, the whole first row will be. So when the target is 0, then for target 0, all that row. So see what I'm saying when I'm saying dp of x and y. So means when y is the target and we are having x elements. So what is the answer? Yes or no? So whenever target is 0, your answer will always be true. I was just doing dp of 0 0 true, but for all the 0 column it will be true. That is what I missed, I think. Otherwise everything is fine. Yeah. Yeah, now it's all right. So this was a very, I think, problem. A very tight constraints were there because the even the memoization doesn't solve, and we have to take place from this. Okay, I think I solved this question first time in 2022. 6 means I think July 23. So on 23 July 2022, I solved this problem first time around 3 years or 2.5 years back. That time I must be in college, and that time, okay, I think I'm not sure if I have solved this problem by my own. Okay, okay, sorry, it is June. Yeah, my June. Okay. Then after that, I solved it in 25th February 23. There I got TLE. This I must be teaching somewhere. This I must be teaching somewhere because if you will see, I first solved using recursive, then I solved using memoization, which was wrong because I have not considered that negative sum. I think okay, negative sum was not here, but I did some mistake here. Some mistake I have taken must be. I was subtracting it by mistake. It should be added. Then next I did, and you can see that time it was accepting the recursive also, and this time the recursive code was giving TLE. I'm not sure why. What's the reason? I'm not sure, but yeah, it is giving. Cool. Hey guys, so does it make sense to everyone? Clear? Hai?
Is it fine? Chalo badhiya hai. Great, great. So yaar, now guys, so if you will see our agenda for today, what we discussed till now. So till now we started with the knapsack problem. Okay. In knapsack we discussed all the three. First we discussed the fractional knapsack. Then we discussed the 0-1 knapsack. Then the unbounded knapsack, and we discuss all the approaches of that, right? Recursive, memoizing, tabulation, then space optimized. Then we discuss some 2D, more 2D DB problems, like we discussed the target sum problem and this subset sum problem. Subset sum. Okay? So now our remaining agenda is LCS, means longest increasing subsequence. Longest common subsequence. The next thing is, 1 minute. The next thing is LIS, the longest increasing subsequence. And in longest increasing subsequence, guys, we have two ways. First is the DP way, the dynamic programming way, that we will solve. And there is one more way using binary search, or specifically I will say lower bound. Yeah, binary search you can say. So that we will solve. Both the we will discuss, and we will discuss some more questions, or I will say variations of, if we will get the time. So we will get the time, so we will discuss the variations of LCS and LIS. वेरिएशंस मतलब कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जहां पर LCS और LIS जैसा ही कॉन्सेप्ट यूज होता है, तो सम प्रॉब्लम्स लाइक दैट. ओके, that is our agenda for our remaining marathon. So we will be having the class till 11 p.m. We have around 1.5 hours more with us. Okay, so where we will be solving this thing, but I know it's more than 2 hours, guys. Okay, so we can take a little break. Okay, and after that break we will continue. I think even one more live is going on of the weekly contest discussion. So some people have joined there for that live. So that is one thing. Till then, whoever are here, can you guys please hit the like button? Currently, we have 22 likes. Let's aim for at least 25 likes. Okay. So that is one thing. Cool, yeah. So guys, please stay here. Okay. Please stay here. We will be continuing after a very small break. Before even going to break, if you guys have any other doubt, any general doubt, if you guys have, and you wanted to ask me related to DSA, related to DP, you can ask that to me. I can clear that doubts. Okay. And after that, we can have the little small break. Any doubts, anyone? You wanted to ask? हाँ जी, नो डाउट. ठीक है फिर, ठीक है फिर. So let's do one thing. Let's have a small break of 5-10 minutes. We will come back at, let's say, 9:20 or 9:25. Like 9:20 will be fine. 5 minutes is good. You guys can also have a break, have some water, have some snacks. Okay, and after that, let's come back and we'll be solving the after that we'll be solving the same. We'll be continuing with the DP and we'll be solving LIS and LCS. Okay, great. So all you have to do is give us your 90 days and we'll help you in upskill and grow. So choose your favorite course, go to our website, start learning, and we are ready with your refunds. We have helped thousands of students and they have got more than 5 crore rupees of refund.
So it's not only helping them in monetary terms, it's also helping them in being consistent and complete the course. So last year our completion rate was 20%, and with 390 challenge, we have seen it significantly going up. See, the idea of 390 was to make students motivated in the form of money, so that they complete the course and they get money. But our main aim was to make students consistent so that they become market ready. All you have to do is give us your 90 days and we'll help you in upskill and grow. So choose your favorite course, go to our website, start learning, and we are ready with your refunds. We have helped thousands of students and they have got more than 5 crore rupees of refund. So it's not only helping them in monetary terms, it's also helping them in being consistent and complete the course. So last year our completion rate was 20%, and with 390 challenge, we have seen it significantly going up. See, the idea of 390 was to make students motivated in the form of money, so that they complete the course and they get money. But our main aim was to make students consistent so that they become market ready. All you have to do is give us your 90 days and we'll help you in upskill and grow. So choose your favorite course, go to our website, start learning, and we are ready with your refunds. We have helped thousands of students and they have got more than 5 crore rupees of refund. So it's not only helping them in monetary terms, it's also helping them in being consistent and complete the course. So last year our completion rate was 20%, and with 390 challenge, we have seen it significantly going up. See, the idea of 390 was to make students motivated in the form of money, so that they complete the course and they get money. But our main aim was to make students consistent so that they become market ready. All you have to do is give us your 90 days and we'll help you in upskill and grow. So choose your favorite course, go to our website, start learning, and we are ready with your refunds. We have helped thousands of students and they have got more than 5 crore rupees of refund. So it's not only helping them in monetary terms, it's also helping them in being consistent and complete the course. So last year our completion rate was 20%, and with 390 challenge, we have seen it significantly going up. See, the idea of 390 was to make students motivated in the form of money, so that they complete the course and they get money. But our main aim was to make students consistent so that they become market ready.
We all know that the tech job market has become really challenging, and it is not always going to be like this. Seeing all this, we have come up with something that we never offer. You all know that we have been doing this 390 challenge where you finish 90% of the course. In 90 days, you get 90% of the cost refund. In addition to this, we have also reduced the upfront fee by 30%. So make the best use of this and invest in your skills, the all-time most valuable asset. All you have to do is give us your 90 days and we'll help you in upskill and grow. So choose your favorite course, go to our website, start learning, and we are ready with your refunds. We have helped thousands of students and they have got more than 5 crore rupees of refund. So it's not only helping them in monetary terms, it's also helping them in being consistent and complete the course. So last year our completion rate was 20%, and with 390 challenge, we have seen it significantly going up. See, the idea of 390 was to make students motivated in the form of money, so that they complete the course and they get money. But our main aim was to make students consistent so that they become market ready. Cool, guys. Let's come back and continue our masterclass, our marathon, the DSA marathon, right? Let me just set. So, guys, are you there? Please write a +1 if you guys are still there. Please do write a +1 here. Please write a +1, everyone. Great, great. So let's move forward. Any doubts? Any doubts that you guys wanted to ask? Like we can discuss. We can continue, right? Great, great, great. So yeah. So guys, we were doing a knapsack problem, right? We were doing knapsack problem, and now our major two things that are remaining is the longest common subsequence and the longest increasing subsequence, right? So let's solve these both the problems now. So let's first discuss this problem known as longest common subsequence. Let's first see what this problem is, okay? And then we will solve the problem also. We have the practice link also for the same. So as the name suggests, in this problem, you are having two strings, right? And you have to find the longest common subsequence of that string. The length of the longest common subsequence, not the subsequence, but the length of that. How? Let me tell you. So for example, your string 1 is something like this. I think it's given like string 1, string 2. Yes. So string 1 is like, let's say A, B, H, A, Y, N, B, O, A, right? And string 2 will be, let's say B, Y, H, I, Y, N, A, Y. Okay. So this is the string 1 of some length. This is the string 2 of some length. So we have to find what? We have to find the longest common subsequence.
Now, how can we find the longest common subsequence? So can anyone tell me, for these both the strings, what is the longest common subsequence? Which is the longest common subsequence? कोई बताएगा मुझे? Can anyone tell me? देखो, if we will take B, H, Y, and A, I think this is the longest common subsequence. Yes or no? Exactly. Yes, Nemesis, right? So it will be 5. So 5 is the answer, right? So how we will do it? So the basic thing will be that I will take one iterator starting from the S1, okay, and one is starting from S2. Both I will have S1 and S2, right? Now what I will do? Key, I will say if they both are equal, then there is no problem. I can consider them in the answer and I can move both forward. So currently both are at 0, 0. Now you can see 0, 0, both are different. This is A, this is B. So can anyone tell me which I will increase? Should I increase I or should I increase J? Which iterator should I increase? Can anyone tell me? So you will say by seeing this that we should increase I. But there is no as such, it's not a greedy problem, right? Here you may see, okay, if you increase I, you will get B and B. But in the DP problem, we will try to increase both. In one recursion call, you will try to increase I. In another recursion call, you will try to increase J. So when I will be increased, what will happen? We are at 1, 0. Up here you can see when we have B and B both are equal, that means now you can have one common character and now both I and J can be increased. This will come here, this will come here. But in case of 0, 1, what will happen? When it is 0, 1, so this is 0, like this is 1 and this was 0. Now again it is not equal. So again we will have two cases. Either increase I 1, 1, either J. So we can see we are having two cases. What two cases? That if S1 of I is equal to S2 of J, then I am increasing one in the answer and I am moving both I and J. But if they are not equal, then I am moving once I and once J. And whichever will give me the maximum value will be my answer. Does it make sense? ये बेसिक से हमारा रिकर्सिव केस हमें बन रहा है. Does it make sense? Right, it makes sense. Great. तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? What will we do here is कि we will take a function recursion which will have a I and a J and both the strings, right? It will have both the strings. Now first of all, I and J both should be in the range. So I will say if I has excluded the range, if I is greater than or equal to the size, or J is excluded the range of S2. If any of both cases are there, if I is greater than or equal to S1 dot size and J is greater than or equal to S2 dot size, then I will return 0. Means now no more size can be there. One of the string has reached the end. Else, this is the base case. So means when you will reach the end of the string, either of that, you will stop. Else, what will be the recursive case? So recursive case will be that if S1I is equal to S2J, if S1I is equal to the S2J, then you will return
1 plus recursion of I plus 1 means you will take that S1 I and S2 j as your subsequence, and both I and j will be increased. But else you will return the max of, once you will try to increase I and once you will try to increase j. Simple. ठीक है? ठीक है? So this is what will happen. And then you can just simply call the function here. ठीक है? Let's submit it. So it's giving TLE. ठीक है? So why it's given TLE? Because we have not memoized it. So first of all, tell me, is the recursive code clear to everyone? Is there any problem with the recursive code? Any of you? No, right? Great. So now let's memorize it. So memorize कैसे करेंगे? So we are having I and J changing. तो आप देखो I और J की वैल्यू जो है, that is getting changed, right? That is getting changed. We can use tabular for this, but let's first memorize it, then we will use the tabular also. Not ISO, right? Not ISO. Let's write a tabular also. So for memorize, what I will do, I will first get the length of both the strings, S1 and S2, right? S1 and S2 I will have. Now, next what I will do is, I will create a 2D vector of size n and m. Right, okay, that was actually required, so that I should not remove. I will pass it here, and I will pass it here. Comma dp, comma dp, comma dp. So I can maybe have a answer here. So if dp of I and j is not equal to -1, I will return dp of I and j, else I will assign. ठीक है? So let's compile and run. Oh, why it's giving TLE? Okay, I have not given here. So I think that is why we were getting TLE. Okay, so in this subset sum problem also, I think I missed one thing. So guys, why I was getting TLE? Because I have not passed the and value of this DP. That is why we are getting a TLE. Now I got it. We missed that. Okay. Otherwise, I was thinking that it should be done, right? Why only the recursive? Now it will be done. Okay. That was the problem actually. So here also, now you can see it's done. Okay. So this is how we are solving it in the recursion plus memoization way. So is recursion plus memoization clear to everyone? Is recursion plus memoization clear to everyone? Should we go with the tabulation approach? Right? Great. So it's 8. ठीक है. Great. So this is done. Okay. Now what is the next thing that we will do?
what is the next thing that we will do? uh, Tabulation approach. So how we will solve in tabulation? Same thing we will have. We will have a dp vector. Okay. So I will say for int I is equal to 1, I is less than equal to n, I plus plus means if you have the ith index and if you have the jth index. Okay. So if s1 of I minus 1, so it's one base indexing, is equal to s2 of j minus 1. If they are equal, that means dp of I and j will be 1 plus dp of I minus 1 and j minus 1. Okay. Else dp of I and j will be the maximum of dp of I minus 1 j and dp of I j minus 1. Simple. And then at the last, I will return dp of n and m. So the same code that we've written, we memorize it. Okay. So when I'm saying if this ith index string is equal to the jth index of s2, that means I can take that in the substring. I can take that in the substring here. Okay. And I can take the previous dp value. Otherwise, take any one of that. Okay. That is the case. So this is what the longest common subsequence is. Is it clear, guys? Should we take some variation of this problem? Let me find a variation of this problem. There was a problem. Let me find the variation of this LCS problem. There was one problem. Uh, okay, sorry guys. I think there was a network issue. So yeah, I'm back. I hope I'm audible. So there's some problems actually, which the variations of this LCS. So let me take out some problems, right? So check if one string is something. This is the problem. So this is the first problem.
variations of LCS. Can you guys recommend me some variations of LCS? Noba Wong, Nemesis, anyone? Yeah, what we discussed, the longest common subsequence. Huh. I'm getting some problems. Don't worry. Okay, I'm getting some of the problems. So let's solve that. Long palindrome subsequence. Yeah, we can take that. Okay. So I'm getting one problem. So one problem I've got, which is minimum number of deletions and insertions. Okay. And let me, okay, the screen is not shared. I will share it 1 minute. And next we will take long palindrome subsequence. This I can take. Yeah, we can take this longest palindromic subsequence. Great. Nice question. ठीक है यार. So these are two questions that we can actually discuss. Okay. So the first is minimum number of deletions and insertions required. This is a very good variation of LCS. And second is longest palindromic subsequence, right? So let's discuss both the problems and let's see how LCS approach or LCS can be used here to solve these problems. ठीक है. अब देखते हैं कि ये प्रॉब्लम है क्या. What is this first problem, which is minimum number of deletions and insertions? So they are saying that given two strings s1 and s2, the task is to remove or insert the minimum number of characters from in s1 to transform is to s2. तो ये क्या बोल रहे हैं कि आपके पास एक स्ट्रिंग s1 दे रखी है. आपको स्ट्रिंग s1 में से आप कुछ कैरेक्टर्स को रिमूव कर सकते हो या फिर आप उन्हें इंसर्ट कर सकते हो सो दैट जो आपकी s1 स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग s2 के इक्वल हो जाए. वो स्ट्रिंग s2 के इक्वल हो जाए. ठीक है. अगर मैं सेम एग्जांपल हूं, मान लो ये हमारा सेम एग्जांपल है. ठीक है. यहां पे हमारी ये स्ट्रिंग s1 है, ये स्ट्रिंग s2 है. तो क्या मिनिमम ऑपरेशंस होंगे कि हम s1 को s2 के इक्वल कर दें. ठीक है. तो आप बोलोगे अभिनव जो कैरेक्टर्स s2 में नहीं हैं वो हमें s1 में डालने पड़ेंगे और जो कैरेक्टर s1 में है बट s2 में नहीं है उन्हें हमें हटाने पड़ेंगे. क्या समझे? मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास एक स्ट्रिंग s1 है, हमें इस s1 स्ट्रिंग से कुछ कैरेक्टर्स को रिमूव करना है, कुछ कैरेक्टर्स को इंसर्ट करना है. राइट. ऐसा करके हमें इस s1 स्ट्रिंग को s2 स्ट्रिंग के इक्वल कर देना है. ठीक है. तो अब ये चीज कैसे होगी? तो हाउ विल डू इट इज कि हम लोग बोलेंगे भाई हमारी जो s1 स्ट्रिंग है, मान लेते हैं हमारी s1 स्ट्रिंग है कुछ इस तरीके से
चलो मान लेते हैं S1 है, हेलो वर्ल्ड, ये है हमारी S1 स्ट्रिंग, ठीक है S1। और हमारी S2 स्ट्रिंग क्या है? S2 है, मान लेते हैं ये, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इस S1 से कुछ कैरेक्टर्स को हटाना। देखो हमें S2 को नहीं छेड़ना है, हम S2 स्ट्रिंग को नहीं छेड़ सकते हैं, S2 हमारी ऐसी की ऐसी रहेगी। हम क्या कर सकते हैं, हम S1 स्ट्रिंग को चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम S1 स्ट्रिंग से कुछ एलिमेंट्स को निकाल सकते हैं, कुछ एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो बात आएगी हम किस एलिमेंट्स को निकालेंगे, किसको नहीं निकालेंगे। तो देखो जो एलिमेंट्स S2 में भी प्रेजेंट हैं और सेम ऑर्डर में प्रेजेंट है, हम उसे क्यों निकालेंगे। जैसे कि आप H है, तो H यहां भी है यहां भी है, क्यों निकालें। देखो E नहीं है तो हम E को हटा देंगे। अब L दोनों में है, O नहीं है, हटा देंगे। अच्छा O है, यहां पे O है, बट Y, अब देखो यहां Y है यहां नहीं है, तो यहां हम लोग Y को इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर W नहीं हटा देंगे, O हटा देंगे, R हटा देंगे, A चाहिए, 2 बार A हम लोग ऐड कर देंगे, L को ऐसे ही रखेंगे क्योंकि है, और D को हटा के Y ले आएंगे, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम देखो अगर हमने इस H को, इस L को, O को और L को, इसको हमने प्रिजर्व कर लिया, इसे हमने नहीं हटाया क्योंकि ये S1 में प्रेजेंट था, S2 में प्रेजेंट, सेम ऑर्डर में प्रेजेंट था, ठीक है। उसके अलावा जितने भी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स थे वो हमने S1 से हटा दिए, और जो एलिमेंट S1 में नहीं थे और S2 में थे वो हमने ऐड कर दिए, ठीक है। तो हमें टोटल ऑपरेशन चाहिए। तो अगर आप देखो तो हमने टोटल इस S1 से 1 2 3 4 5, हमने 5 एलिमेंट्स को रिमूव किया है, ठीक है। और हमने S2 के 4 एलिमेंट्स को इंसर्ट किया है, तो हमने टोटल 9 ऑपरेशंस किए हैं यहां पर, और आप इससे कम ऑपरेशंस नहीं कर सकते हो। आई कैन गारंटी यू कैन नॉट डू लेस देन दिस, ठीक है। तो ऐसा कैसे हो रहा है, देखो अगर आप देखो तो हम एट द लास्ट S1 और S2 में जो भी लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस है हम उसे प्रिजर्व कर रहे हैं, बाकी S1 के एक्स्ट्रा एलिमेंट्स को हम रिमूव कर दे रहे हैं, और C2 के एक्स्ट्रा एलिमेंट्स को हम S1 में ऐड कर रहे हैं। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस की लेंथ कितनी है, जैसे इस केस में आप देखो, इस केस में जो आपका लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस है वो है HLLOL, और उसकी लेंथ है 5। तो मतलब आपके S1 की लेंथ है 10, S2 की लेंथ है 9, और लेट्स से लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस लेंथ है 5। मतलब S1 में से आप 5 एलिमेंट्स को कंटेन रखोगे, और n-l एलिमेंट्स जो हैं आपके उनको आप हटा दोगे क्योंकि वो एक्स्ट्रा हैं, और S2 में 5 एलिमेंट्स अभी कंटेन रहेंगे बिकॉज वो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस में भी है, और 4 नहीं है उसको आपको इंसर्ट करना पड़ेगा, मतलब m-l को आपको इंसर्ट करना पड़ेगा। तो अगर हमें लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस लेंथ मिल जाए तो हम उसको n से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, m से सब्ट्रैक्ट करें तो फाइनल आंसर आपका होगा n-l प्लस m-l। यस और नो, यही होगा ना, ऐसे ही सॉल्व करेंगे हम लोग। एनी डाउट एनीवन, ठीक है। दिस इज हाउ वी विल सॉल्व, ठीक है। दिस इज हाउ वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम। तो क्या करेंगे हम इस प्रॉब्लम में, हम सबसे पहले तो जो हमने लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस का जो हमने कोड लिखा था उसको हम यहां पे पेस्ट कर देंगे, क्योंकि हम उस फंक्शन को यूज करने वाले हैं।
कौन सा फंक्शन है? गेट एलसीएस लेंथ। तो हम 2 स्ट्रिंग देंगे, हम उसकी लेंथ हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो हमारी S1 की लेंथ निकाल रहे हैं, उसके बाद हम S2 की लेंथ निकाल रहे हैं। तो S1 की लेंथ हो गई और S2 की लेंथ हो गई, ठीक है। नाउ आफ्टर गेटिंग द S1 एंड S2 लेंथ, हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं? हम नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि भाई एक काम करो कि लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस की लेंथ बताओ, S1 S2, वो मिल गई। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? n माइनस एल हमें इतने डिलीशन करने पड़ेंगे, प्लस m माइनस एल हमें इतने इंसर्शन करने पड़ेंगे। सॉल्व हो गया, दैट्स इट। क्लियर है? तो यहां पे हमने कुछ नहीं, हमने एट द लास्ट लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस वाले एजेंडा को ही यूज किया। क्या है प्रॉब्लम सबको क्लियर है? हाउ वी हैव सॉल्व्ड इट एवरीवन? गाइस प्लीज हिट द लाइक बटन, वी हैव गॉट जस्ट 25 लाइक्स, प्लीज मेक इट 30 at least. Please make the like count to 30. Okay. Okay. Great. 1 minute. ठीक है, सही है यार, बढ़िया है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, वो है लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस। सो व्हाट वी आर डूइंग इन दिस लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस कि हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है, उसमें से हमें उस स्ट्रिंग का लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस बताना है, कि एक ऐसा सब सीक्वेंस जो पैलिंड्रोम और लॉन्गेस्ट है सब सीक्वेंस, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इस स्ट्रिंग की बात करो, ठीक है, अगर आप इस स्ट्रिंग की बात करो तो क्या हो रहा है यहां पर कि हमारे पास ये रहा, ये हमारी स्ट्रिंग है। तो इसके लिए जो इसका लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस है वो क्या है? कोई बताएगा? सॉरी, नॉट लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, आई एम सेइंग लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस, वो क्या है? Which is the longest palindromic subsequence? Can anyone tell me? कोई बताएगा? तो देखो, आई थिंक दिस BABC दिस इज द लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस। इससे लंबा पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस नहीं आ सकता है। कैन वी हैव अ पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस मोर देन दिस? नो। Anyone who can think of how can we solve this problem? How can we find the longest palindromic subsequence? Anyone who can tell me? Think of it. How can we find the longest palindromic subsequence? How can we find it? The longest palindromic subsequence.
One hint is there. Exactly. So what I will do, so if we have this string, right, and if you will reverse the given string, so after reversing the string will become like this. So the reverse string will be B A C B C B A B B. This is the reverse string, right? So if you will, because what happens in palindrome? Palindrome means that it remains same when you reverse it. So when you reverse a palindromic subsequence, it remains same, right? So in this case, when you have a string and a reverse string, if you will find the LCS of these both the strings, means longest common subsequence of this both the string, then the length of the longest common subsequence of this both the string and its reverse string is the length of the longest palindromic subsequence. Length of the longest palindromic subsequence. Did you got it? That is the case. So how can we do it here? We will say, do one thing, use the same code which is used here, have the same approach, okay? Have the same approach, just reverse the string. So reverse s dot begin comma s dot end, and then just find the longest common subsequence what we have done already. Okay, let's run it. Oh, sorry, it's not it's not like this. It actually does not reverse the string like this. We will reverse the rev one only. By the way, both will work. Done. Okay, it's done. So this is a very good variation of longest common subsequence, right? So if you will see what we did till now, so we started with learning about knapsack problem. We started with the fractional knapsack. Then we solved the fractional knapsack. Then we did 0 1 knapsack. Okay. Then we solved the 0 1 knapsack. Unbounded knapsack. We solved the unbounded knapsack, right? Then we solved the problem called target sum. The problem called subset sum. All of that we have solved. After that, we started with the longest common subsequence. We solved the longest common subsequence. Then we solved two variations of longest common subsequence, minimum number of deletions and insertions, and longest palindromic subsequence, right? So this is the thing that we did till now. So around 3 hours of our marathon is done, and we've done this thing till now. Now the last concept that we planned today is longest increasing subsequence, and longest increasing subsequence is something you will see. It can be done using DP also. You can see there is a way where we are doing it using DP also. We will write the recursive, we'll memorize it, all of that. Okay, but there is one more way of solving this. So you can see there is one more way of solving it using this one, using binary search. So we'll discuss both the approaches of doing longest common subsequence. One we will do using basic DP, dynamic programming, and one we will do using binary search. Okay, so both the ways of finding longest increasing subsequence we will discuss. Okay. Before that, let's have let's see if you guys have any doubts or anything. We can discuss that. We okay, it's 10 now, so we are done with 3 hours of our marathon, and in the remaining 1 hour, as you you know, we'll be continuing with the LIS. We will solve LIS. We will have both the methods of LIS, right? And after that, we will conclude the class, right? So guys,
How was it till now? Cool. ठीक है. Okay. So okay, give me just 5 minutes, okay, and I will be back. And after coming back, we'll be solving the longest increasing subsequence and longest increasing subsequence with the binary search. Okay. Last break of 5 minutes. After we will conclude our session, and we will conclude this class, and we will meet in the next class. Okay. Just give me this time only 5 minutes. We will be coming back at 9:10:05. Okay, and we will be solving longest common subsequence, longest increasing subsequence, right? Great. All you have to do is give us your 90 days and we'll help you in upskill and grow. So choose your favorite course, go to our website, start learning, and we are ready with your refunds. We have helped thousands of students and they have got more than 5 crore rupees of refund. So it's not only helping them in monetary terms, it's also helping them in being consistent and complete the course. So last year our completion rate was 20%, and with 390 challenge, we have seen it significantly going up. See, the idea of 390 was to make students motivated in the form of money, so that they complete the course and they get money. But our main aim was to make students consistent so that they become market ready. We all know that the tech job market has become really challenging, and it is not always going to be like this. Seeing all this, we have come up with something that we never offer. You all know that we have been doing this 390 challenge where you finish 90% of the course. In 90 days, you get 90% of the cost. In addition to this, we have also reduced the upfront fee by 30%. So make the best use of this and invest in your skills, the all-time most valuable asset. All you have to do is give us your 90 days and we'll help you in upskill and grow. So choose your favorite course, go to our website, start learning, and we are ready with your refunds. We have helped thousands of students and they have got more than 5 crore rupees of refund. So it's not only helping them in monetary terms, it's also helping them in being consistent and complete the course. So last year our completion rate was 20%, and with 390 challenge, we have seen it significantly going up. See, the idea of 390 was to make students motivated in the form of money, so that they complete the course and they get money. But our main aim was to make students consistent so that they become market ready. All you have to do is give us your 90 days and we'll help you in upskill and grow. So choose your favorite course, go to our website, start learning, and we are ready with your refunds. We have helped thousands of students and they have got more than 5 crore rupees of refund. So it's not only helping them in monetary terms, it's also helping them in being consistent and complete the course. So last year our completion rate was 20%, and with 390 challenge, we have seen it significantly going up. See, the idea of 390 was to make students motivated in the form of money, so that they complete the course and they get money. But our main aim was to make students consistent so that they become market ready. Okay. Yeah. So let's continue with LIS, longest increasing subsequence, right? So what is LIS? What is longest increasing subsequence? So okay, are you there? Are you guys there? Nemesis, Nopewong, everyone. Great.
So what is longest increasing subsequence? So we are having an array. Okay, let me give you a very good example. I think this one has a better example. Yeah, let's take this array. Okay. So in this array, if you have to find the longest increasing subsequence, how can we find? How can we find the longest increasing subsequence? Okay. So what we have is, we have the array with us. We have the array with us 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, this is the array, let's say. So we have our array with us. Then what we do is, we have to find the longest increasing subsequence. For example, here it's 3, then 7, then 40, then 80. Or you can take 3, then 10, then 40, then 80. Right. That is the one thing. Let's not have that here. Yeah, cool. So that is one thing that we will discuss. ठीक है. अब हम क्या करेंगे? What we will do is कि here we can solve this problem using DP, dynamic programming, right? So for example, when we are at index number I, again, we will have both the cases, that whether we should take that index or we should not take that index. We'll give two options. Either to take that particular element in our longest increasing subsequence, or not take that element in our longest increasing subsequence. We have both of that options, right? So which option should we prefer? So what we will do is we will keep track of a previous element also, because in the longest increasing subsequence, the next number that you are taking should be greater than the previous index, right? Initially, when we will start with our loop, we will consider our previous index as -1, means we have not taken any previous number, and we are starting from the index number 0. Now first case is that you will take this index number 0. Can you take it? Yes, because previous was -1. So if you not take it, you will simply go to the next index. But if you will take this index number 0, this one, okay, if you will take this index number 0, then it will be 1 plus recursion of 0, 1. Means now you have got this index number 0. This is your previous index, right? And if you have taken a 0 now, you can see now you cannot take any of this before. Because if you have taken 50, now you take something more than 50 only, which is 80. Right? That is why for every combination you will see. So let me code also side by side so that you can have a better understanding. So what we will do with the code? So I will say, okay, this is the array. Okay. So I will say, okay, kaam karo, do one thing, have the recursive code. Okay. And in this particular recursive code, we will be having the current index where we are. कि हमारा करंट एलिमेंट कौन सा है जिसे हमें चूज करना है कि इसे हम टेक करें या नॉट टेक करें. So we are at the index number I, and we will choose either to take it or not take it. And along with that, we will have the previous index also, means the previous index that we have taken. So initially when I will call this function, तब मेरा previous -1 होगा, ठीक है. और हम साथ में array भी यहाँ पे पास कर देंगे, और and the size also will be, ठीक है. अब देखो, if I has reached n, means if I has reached the end of the array, then you will simply return what? 0. कि भाई अब there is no extra element present. ठीक है. Else, first is the not take case. Not take means that you are not taking the current element. So if you are not taking the current element, what we will do is we will simply move to the next index. So what is the not take case? Recursion of I plus 1. Previous will be as it is, and ARR means you are not taking the current element. Now we will have the take case. ठीक है. अब देखो take case तभी होगा
जब जो करंट एलिमेंट है वो प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा हो और या फिर प्रीवियस एलिमेंट -1 हो। तो आई एम सेइंग अगर प्रीवियस एलिमेंट -1 है या फिर और अगर प्रीवियस एलिमेंट -1 है और इफ द करंट एलिमेंट is greater than the previous element, then only we can take it. How? So in this case I will say the take case will be one plus, because we have taken this, and I will move to the next index, and for the next index our previous will be the current I. Okay. Now in the answer I can take the maximum of both. So answer will be the max of answer comma, let's say here it will be not take, and here it will be take, and finally I will return the answer. Okay. So this is just the recursive case, and I can just call it here with initially 0 comma -1 comma arr. Okay, we have to also pass the size. Okay. So is this recursive function, recursive code clear to everyone? What this recursive code is doing? It will give TLE. But is this recursive code clear to everyone? What it is doing? So that next we can move to the uh, like memorize the code, right? Exactly. So now what we will do, we will memorize it. If you want to memorize this code, what is happening is that we have one I with us, the I index, and we have the previous value. A problem is previous can also be -1. So whenever I will take the previous, I will take previous +1 because -1 will go out of bound. Okay. So I will take vector of vector dp of size n comma vector of n+1 in this case, or n+1 comma n+1 होता है issue, ठीक है, and we will do this, and here we'll take the reference, always we forget. Now simple, if dp of I and previous +1 is not equal to -1, means we have taken it, so we can directly return, else we can assign in the answer. Okay. So this is the case. Let's submit it. Done. Okay. This is what we are doing. Okay. So this is the memorize, like recursion plus memoization approach for LIS, longest engaging subsequence. If you want, you can also have the tabulation approach that I'm giving you guys as the homework, as your assignment, right? But if you wanted to see, you can see here what we did here also. First, I think first is the different. Yeah, this is the this is the simple recursive way. Okay. Then next they have the memoization. Then after memoization, this is the iterative way of doing this. So I'm not doing it because I have to tell you the binary search approach also. So take this approach as a kind of a homework to you, okay, that you guys can do. And after that, it's done. Okay. Tabulation is the last approach. Now, guys, can anyone tell me? Sorry, can anyone tell me the time complexity for this code? Time complexity क्या है? Time and space complexity both. So tell me the time and space complexity of this particular code. क्या होगी?
Yeah. So both time and space complexity will be order of n square. Why? Because see, first of all, we are having dp vector of n comma n, so it's n square. Exactly, Pratik and Nemesis, right? And mostly in recursion, whatever is the time space complexity dp vector, that is the time complexity also. Why? Because we are storing that dp values only. We are not having overlapping sub problems, right? So when we are solving this longest decreasing subsequence, so it's memoized solution or even a tabulized solution, tabulation, both will be having time complexity of order of n square and space complexity of order of n square. Both will have the same. But we have a binary search approach also, which is very good approach of finding the longest increasing subsequence. There we have the time complexity of just order of n log n and space complexity of order of n. Yes. So it is a lot optimized. Space complexity is optimized a lot. Kind of a linear it is, right? So how we can do that? Let's discuss. So here we use the something called lower bound. So do you guys know what is lower bound and what is upper bound? You can see here. Do you know what is lower bound, what is upper bound? Everyone? How many of you don't know? Insert first in vector each element if one is in range, replace else. Exactly, Pratik. This is what we will do. Right. तो lower bound क्या होता है यार? Let's say, so first of all in lower bound, we should have a sorted array. ठीक है? Let's say if the array is like this. No, it's a concept of binary search actually, Nemesis. So if lower bound is something not clear, maybe it will be a little difficult, but I will tell you. So what is lower bound? So in binary search, we have a sorted array, right? We have a sorted array. So what we do is, let's say we have a number x which is 9. So what is lower bound? Lower bound means first index of the element equal to or greater than x. So you have to find the first index of the element which is equal to or greater than x. For example, tell me which is the first index in this array which is equal to or greater than x. Can anyone tell me? Can anyone tell me? Yeah, the index. So it is the index number 3, right? Because there is no element equal, so the element greater is 3. Acha, if x is 15, then what is the lower bound? If x is 15, then what is the lower bound? It is 4 only, because 4 is present. And let's say if x is 25, then lower bound is not present, or we say it as 6, means yahan pe, sixth index, right? So what we do, we use this lower bound concept in finding the longest increasing subsequence using the binary search technique. Why we say binary search? Because this lower bound is actually calculated using binary search. So I cannot discuss much in detail, otherwise it will be a whole new concept of lower bound and upper bound and binary search. I was thinking that after DP I can take, if response is good, I can take some marathon of something like binary search or some other topic. But yeah, for now just understand कि lower bound is the first index of the element which is equal to or greater than the value of x. So not now I want response from everyone, a final to ask, so that I can understand if you understand lower bound or not. If x is 12, what is the lower bound? Tell me. For x12, what is lower bound? Tell me everyone. Exactly 4. Why 4? Because
you will, so lower bound first find the element equal to it. There is no equal element, then it will find the element greater than it. So greater element is 15 whose index is 4, right? Great. अब देखो हम लोग क्या करेंगे कि लेट्स टेक द सेम एरे में भी, ठीक है। अब देखो एक जो आप लोग बात समझ लो कि अगर हमें लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस निकालना है तो हम क्या ट्राई करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि जितना हो सके उतनी स्मॉल वैल्यू से हम अपने सबसीक्वेंस की स्टार्ट करें, क्योंकि वैल्यू जितनी स्मॉल होगी उतना ही अच्छा होगा हमारे लिए। क्यों? वैल्यू जितनी स्मॉल होगी हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। यस और नो? बिल्कुल, है ना। ऐसे यहाँ पे अगर हम 50 से स्टार्ट कर लेते तो फिर हमें बाकी सारे छोटे मिल रहे थे, तो हमारे लिए पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। जितनी छोटी वैल्यू होगी उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि उसके बाद हमें उससे बड़ी वैल्यू मिलने की चांसेस से ज्यादा है, राइट। तुम क्या करते हैं इसमें, अगर हम सेम एग्जांपल ले लें, ठीक है, तो हम सबसे पहले तो एक आंसर वेक्टर बना लेते हैं यहां पर, ठीक है। और ये हमारा गिवन है ARR, तो हमारे पास ARR गिवन है यहां पर, ठीक है। और हम एक आंसर वेक्टर बना देते हैं, ठीक है। और हम इस आंसर वेक्टर में इस ARR का जो 0th इंडेक्स है हम उसको ऐड कर देते हैं, इस इंडेक्स को 50, उसको हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब आप समझना एक चीज, अब हम उसके आगे के जो भी एलिमेंट्स हैं हम उसका लोअर बाउंड इस आंसर वेक्टर में निकालते हैं। तो हम, हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है 1 से लेकर एंड तक, ठीक है। तुम्हारा नेक्स्ट एलिमेंट है 3, तो आप बताइए इस एलिमेंट 3 के लिए इस आंसर वेक्टर में इसका लोअर बाउंड क्या होगा? एलिमेंट 3 का लोअर बाउंड क्या होगा आंसर वेक्टर में? हाँ जी, 0, ठीक है। तो अगर 0 है इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब ये है कि अभी हमारे आंसर वेक्टर में एक वैल्यू है 50, ठीक है। देखो अगर ये 3 उस वैल्यू से बड़ा होता, मान लो ये 3 की जगह 300 होता, 300, तो हम इसको इजीली यहां पे ऐड कर देते हैं। बट अभी 300 तो है नहीं, तो हम इसको आगे, तो हम सिर्फ 3 को तो ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें चाहिए लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस। तो अगर जो एलिमेंट होता है हमारा ARR ऑफ आई, वो अगर हमारे आंसर के लास्ट एलिमेंट से, आंसर डॉट बैक से अगर बड़ा होता है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप सिंपली आंसर में उसको पुश बैक कर देते हो, ठीक है, उसको पुश बैक कर देते हो। एल्स अगर बड़ा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ये 3 जो है ये बड़ा नहीं है, तो हम इसको पुश बैक तो कर नहीं सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसका, हम ये देखेंगे भाई कि क्या इस 3 से बड़ा एलिमेंट है उस पूरे आंसर वेक्टर में, क्योंकि अगर बड़ा एलिमेंट है तो उसकी जगह हम 3 को ले लें, क्योंकि हम ट्राई करेंगे जितने स्मॉल वैल्यू से स्टार्ट करें। तो हम क्या करते हैं, तो हम उस आंसर का लोअर बाउंड निकालते हैं, सॉरी उस करंट एलिमेंट का इस आंसर वेक्टर में लोअर बाउंड निकालते हैं, जो कि आएगा हमारे केस में 0, और हम उस 0 इंडेक्स को इस 3 से रिप्लेस कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उस आंसर एरे में उस लोअर बाउंड इंडेक्स को उस एलिमेंट से रिप्लेस कर देते हैं। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। अब मानते हैं 10 आया, ठीक है। अब बताओ हम इस 10 के लिए क्या करेंगे, अब हम इस 10 के लिए क्या करेंगे? अब जो 10 है वो हमारे लास्ट आंसर से बड़ा है, तो हम उस 10 को सीधे सीधे इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। अब 7 आया, अब बताओ क्या 7 बड़ा है? इस 7 बड़ा तो नहीं है, तो हम निकालेंगे 7 का लोअर बाउंड। अब बताइए इस आंसर वेक्टर में 7 का लोअर बाउंड क्या है, कौन से इंडेक्स है? इंडेक्स नंबर 1, तो हम उसको 7 कर देंगे।
और हम आगे बढ़ेंगे। अब आया 40, अब 40 तो बड़ा ही है तो उसको सिंपली ऐड कर दो। फिर आया 80, 80 भी बड़ा है, 80 को भी ऐड कर दो, सिंपल हो गया। तो फाइनली आपकी जो लेंथ आती है ना इस आंसर की, वो आपका लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसे लेंथ होती है। अच्छा, बहुत लोग सोचते हैं ये जो आंसर बन रहा है ये हमारा लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है। ये ऐसा नहीं होता है, हमारे केस में ऐसा हो रहा है, बट बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां पर ये जो आंसर है ये हमेशा लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस नहीं बनता है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है? तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आई थिंक मुझे जल्दी से यहाँ से उठाना पड़ेगा, जल्दी से एक टेस्ट केस उठाना पड़ेगा। बस ठीक है, हो गया। ठीक है, सो ये रहा। इसके लिए देखते हैं, ठीक है? इसके लिए क्या होगा कि हमारा एरे है, ठीक है? ये उसके इंडेक्सेस हैं, ठीक। तो अब हमें दिया गया है कि एक ये हमारा एरे है, ठीक है? हमने एक आंसर निकाल लिया। अब देखो, पहले हमने 10 को इंसर्ट कर लिया, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हमें अगला एलिमेंट मिला 9। अब 9 10 से बड़ा तो नहीं है, और 9 का लोअर बाउंड क्या है, 0, तो यहाँ पे हमने 9 को डाल दिया, ठीक है? फिर हमें मिला 2, अब 2 भी 9 से बड़ा नहीं है तो उसको यहाँ पे डाले, उसको लोअर बाउंड आ गया 2। अब मिला 5, तो 5 को हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है? वो बड़ा है वो। फिर मिलेगा 3, तो 3 5 से बड़ा नहीं है, उसका लोअर बाउंड 1 है, तो 1 उसको यहाँ पे डाल दिया 3, ठीक है? थोड़ा ऊपर ही ले लेते हैं इसको। फिर क्या किया हमने, फिर मिला 7। अब 7 भी बड़ा है 3 से, तो यहाँ पे आ गया सीधे सीधे, ठीक है? अब मिला 101, तो जो 101 है वो आप देखो कि वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब आया 18, तो 18 भी जो है ना वो हमारा यहाँ पर इन प्लेस ऑफ ऐड हो जाएगा। तो यहाँ भी ऐसा है कि हमारा आंसर वही आ रहा है, बट ऐसा होता नहीं हमेशा। यहाँ भी हमारा जो सब सीक्वेंस है वो आई थिंक एज अ आंसर आ रहा है, हाँ। तो ठीक है, मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, ठीक है? इसके लिए आंसर हो जाएगा 4। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम पहले तो एक राइट ऐसा होता नहीं, मैं एक बार फिर से मैं एक टेस्ट केस आपको निकाल के दूंगा यार। एक टेस्ट केस होना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ, रुको। हाँ, मिल गया, शायद मिल गया मुझे। तो मान लेते हैं 5 है, फिर 3 है, फिर 100 है, ठीक है? फिर 2 है, और फिर 7 है, ठीक। अब देखते हैं, अब देखो, अब इसके लिए अगर आप निकालोगे ना लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस, तो वो आएगा, या तो वो आएगा 3,10 या 3,7 या 2,7 या 5,7 या 5,100। 2 ही साइज का आएगा ना, 3 साइज का तो नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम आंसर में इसको निकालेंगे। तो हम आंसर में बोलेंगे, रुको यार, इसको हटा लो, ठीक है? 4 के रखते हैं, वो टेस्ट केस बिका हुआ था, ठीक है? तो इसमें हम पहले 5 ले लेंगे, ठीक है? अब यहाँ से स्टार्ट किया, ये 3 है, तो 3 5 से बड़ा तो नहीं है, तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, हम 3 का जो लोअर बाउंड आएगा वो आएगा 5 का रिप्लेसमेंट, तो वहां लिख देंगे उसको, ठीक है? फिर हमें 100 मिला, ठीक है? अब हमें मिलेगा 2। अब जो 2 है वो क्या है, वो उसके बाद अब बताइए आप लोग कि 2 का लोअर बाउंड क्या है इस आंसर एरे में। 2 का लोअर बाउंड क्या है? नहीं, 100 कैसे है, नहीं 1 कैसे है, 0 है ना, 0। लोअर बाउंड का मतलब होता है फर्स्ट इंडेक्स विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये भी तो ग्रेटर है ना, तो 0 है उसका लोअर बाउंड, राइट? तो यहां पे 2 हो जाएगा,
एंड दैट्स इट। तो आपकी लेंथ कितनी आ गई, 2 आ गई। मतलब जो LIS का साइज है वो 2 है, जो कि सही आंसर है। बट 2,100 सही लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस नहीं है। तो सिर्फ इतना बता रहा था कि ये जो आंसर होता है इसका लेंथ हमेशा लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस लेंथ होगा, लेकिन ये जो वैल्यू लास्ट में बचेगी वो हमेशा लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस नहीं होता है। ठीक है, तो ये है। हम लोग क्या करेंगे, आंसर ले लेंगे। पहले हम लोग आंसर में पुश बैक कर देंगे ARR ऑफ 0, फिर हम इंडेक्स नंबर 1 से लेके n तक आइट्रेट करेंगे। ठीक है, तो अगर जो वैल्यू है हमारे एरे की वो अगर आंसर के लास्ट एलिमेंट से बड़ी है, फिर तो सिंपली उसको पुश बैक कर दो, सिंपली उसको पुश बैक कर दो। एल्स क्या करो, एल्स हम उसका लोअर बाउंड निकालेंगे। तो लोअर बाउंड निकालने के लिए एक इनबिल्ट फंक्शन होता है, लोअर बाउंड आंसर डॉट बिगिन कॉमा आंसर डॉट एंड कॉमा ARR ऑफ I। तो ये आपको देता है आइट्रेटर और इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो आंसर डॉट बिगिन। इस तरीके से आपको लोअर बाउंड मिल जाएगा उस पर्टिकुलर नंबर का, एंड देन उस लोअर बाउंड में आप लोग ARR ऑफ I को डाल दोगे, एंड देन फाइनली जो भी लेंथ होगा आंसर का वो हो जाएगा आपका आउटपुट। हाँ, तो यार आपको जावा में आपको लोअर बाउंड निकालना है यार, अगर नेमेसिस, फिर तो आपको पूरा फंक्शन लिखना पड़ेगा। जावा में आप कोई भी इनबिल्ट फंक्शन नहीं होता जितना मुझे पता है, तो या कोई दिक्कत नहीं है ना। सो सॉल्व हो गया। ठीक है, तो यार दिस इज व्हाट लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस वाज, राइट, जिसको मैं दो तरीके से सॉल्व किया। फर्स्ट वे वाज यूजिंग रिकर्जन, डीपी, मेमोवाइज, and then using this. If you will see, this is having time complexity of just order of n log n। कैसे, देखो स्पेस तो ऑर्डर ऑफ n है क्योंकि सिर्फ एक आंसर वेक्टर लिया है हमने, तो स्पेस सिर्फ ऑर्डर ऑफ n है। पर अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये ऑर्डर ऑफ n की ये लूप है, ऑर्डर ऑफ n की ये लूप है, प्लस प्लस ये जो लोअर बाउंड फंक्शन है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ log n होती है। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। क्लियर है, क्लियर है, ग्रेट। तो यार गाइस दिस इज व्हाट वी प्लान टुडे एक्चुअली, है ना, एंड वी आर डन विथ व्हाट एवर वी प्लान। एक LIS का वेरिएशन ले लेते हैं। Variation of LIS means a problem that can be solved using the same concept of LIS. So we have multiple such problems. हाँ, so ये जो प्रॉब्लम है ना, थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे LIS से। देखो LIS में क्या होता है कि हमें लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस बताना होता है कि लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस कौन सा है। ठीक है, यहां पे हमें सिर्फ लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस नहीं बताना है, हमें बताना है मैक्सिमम सम ऑफ आर इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस। मींस वो सब सीक्वेंस जिसका सम मैक्सिमम हो। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मान लेते हैं हमारा जो प्रीवियस केस था ये वाला, इसमें आपके बहुत सारे इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस आ जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसके एग्जांपल ले लूं, इस वाले केस के एग्जांपल अगर लें तो इसमें बहुत सारे इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस आ जाएंगे। जैसे कि मैंने जिसमें यहाँ पे जब मैंने यहाँ पर 7 को ऐड कर दिया था तो आप देखो आपके पास बहुत सारे इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस आ गए थे। क्या क्या आ गए थे, एक था 5,7, 2,7, 3,7, 3,100, 5,100। बट अब बताओ कि कौन सा सब सीक्वेंस ऐसा है विच इज इंक्रीजिंग ऑल्सो एंड जिसका सम सबसे हाईएस्ट है। लॉन्गेस्ट नहीं चाहिए हमें अब लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस नहीं चाहिए, हमें वो सब सीक्वेंस चाहिए जिसका सम
हाईएस्ट, तो वो होगा 5,100 एग्जैक्टली, विच इज 105। ठीक है, तो ये बहुत ही सिमिलर प्रॉब्लम है, इसमें हम लोग करेंगे वही। इसको ये बाय द वे बाइनरी सर्च से नहीं हो सकता है, क्योंकि बाइनरी सर्च का जो अप्रोच है वो सिर्फ और सिर्फ यूज होता है लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस निकालने के लिए। ये हम लोग सॉल्व करेंगे यूजिंग द रिकर्सिव या फिर आइट्रेटिव वे। ठीक है, तो देखो रिकर्सिव हम लोग क्या करते थे कि हम लोग सिर्फ इतना कर रहे थे कि जब हम एक एलिमेंट को कंसिडर करते थे, यहां देखो आप, जब हम एक एलिमेंट को कंसिडर करते थे तो हम 1 को ऐड कर देते थे कि भाई हमने एक एलिमेंट ले लिया है, सो दैट लास्ट में जाते जाते जो भी मैक्सिमम साइज आए, जिस भी सबसिक्वेंट ज्यादा एलिमेंट हो, हम उसको आंसर बना देते थे। आप बताओ इस केस में हमें बस इस पूरे कोड में सिर्फ एक चेंज करना है, वो चेंज क्या होगा? कोई बताएगा वो चेंज क्या होगा? व्हाट चेंज शुड वी डू? टेल मी। I'm going to take some water. Until then, you guys can think that what change can be done. या कोई हिंट? थिंक ऑफ दैट। देखो यहां हम लोग क्या कर रहे हैं, करना वही है कि हमें एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस निकालना है, बट लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग नहीं निकालना है, हमें वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस निकालना है जिसका जो सम है वो मैक्सिमम हो। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो आपका कुछ इस तरीके से आपका एरे है। ठीक है, कि आपके पास है 5 2 7 300 और 5 या फिर 8। ठीक है, तो एक सीक्वेंस आपका, तो इसमें मैक्सिमम 3 साइज का इंक्रीजिंग सीक्वेंस बन सकता है। फॉर एग्जांपल 5 700 बन सकता है, 2 3 और 100 बन सकता है। ठीक है, या फिर वेट, तो इस केस में क्या होगा कि जो आपका लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस बनेगा वो बनेगा 5,7,8, और ये आपका आंसर हो जाएगा कि भाई ये आपका लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है। हमारे केस में आपको लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस नहीं चाहिए, भले ही उसकी लेंथ छोटी हो, उसका सम ज्यादा हो, मैक्सिमम सम इंक्रीजिंग सीक्वेंस चाहिए, जो कि होगा 5,100। ठीक है, तो यहां हम लोग क्या कर रहे थे इस वाले केस में कि हमें जब भी कोई एलिमेंट मिलता था तो हम उस एलिमेंट के लिए हम उस रिकर्जन कॉल में 1 ऐड कर देते थे। मतलब हमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट मिल गया है जो कि हम अपने रिकर्जन फंक्शन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन क्या करेंगे कि हम 1 ऐड करने की बजाय हम उस एलिमेंट की वैल्यू को ऐड कर देंगे। मतलब कि भाई हमें ये नहीं निकालना कितना लंबा है जो हम 1 ऐड कर रहे हैं हर एलिमेंट के लिए, हमें निकालना उसका सम कितना ज्यादा है, तो हम एलिमेंट की वैल्यू ही यहां पर ऐड कर देंगे। दैट्स इट, बाकी सब कुछ लगभग सेम ही रहेगा। क्या ये बात समझ में आई? बोलिए, डज दिस थिंग मेक सेंस? राइट, सो सेम फंक्शन return 0, -1, n, arr, tp। लूप के अंदर रिकर्जन कैसे वर्क होता है?
मैं समझा नहीं अभी आप क्या बोल रहे हो। तो ये सॉल्व हो गया। मैं समझा नहीं आप क्या बोल रहे हो। लूप के अंदर रिकर्जन कैसे वर्क करता है मींस। तो अगर अगर लूप के अंदर आप बहुत सारे रिकर्जन कॉल चला रहे हो, राइट, तो हर रिकर्जन कॉल पहले खुद एग्जीक्यूट होता है अगले रिकर्जन कॉल जाने से पहले, राइट। तो अगर आप अच्छा तो ठीक है यार, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। अगर आप बोलोगे तो उसको हम अलग विल टेक अ डिफरेंट, इट्स अ वेरी डिफरेंट टॉपिक, राइट। तो हम, अगर आप बेसिक रिकर्जन बोल रहे हो तो हमने लास्ट क्लास में हमने करा हुआ है। तो लास्ट क्लास में हमने करा ही यही था, हमने पूरा बेसिक से डीपी पढ़ा था। तो आप वो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो भैया। मल्टीपल एलआईएस में लार्जेस्ट सम किस एलआईएस का है वो भी निकाल सकते। देखो वो जो है वो बैक ट्रैकिंग हो जाएगी, ठीक है। वहां पर आपको बैक ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। वहां पर आप क्या करोगे ना कि कि आप एक वेक्टर लोगे, ठीक है, और आप उस वेक्टर में उसको इंसर्ट करते जाओगे, ठीक है। आप उस वेक्टर में उसे इंसर्ट करते जाओगे, ठीक है। और फिर इंसर्ट करने के बाद में आप लास्ट में जो भी मैक्सिमम होगा वो प्रिंट कर दो, तो आपको पूरा बैक ट्रैकिंग आएगा। वो एक पूरा व्हाट आई विल से ब्रूट फोर्स कोड हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल दे दो ना प्लीज, ड्राई रन प्लस कोड। किस इसका इसका एग्जांपल, ठीक है। मतलब आई थिंक यू यू ज्वाइन लेट अभी, तो हमने इसको पूरा अभी एक्सप्लेन किया है इसके पहले। अभी जब हमने लॉन्गेस्ट इंक्रीज सब्जेक्ट को डिस्कस किया था तो हमने पूरा ड्राइन किया था। बट अगर आप बोल रहे हो तो मैं फिर से ड्राइन कर लेता हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर मैं सेम क्वेश्चन की बात करूं और अगर हम यह टेस्ट केस देखते हैं, ठीक है, तो लेट्स डिस्कस दिस पर्टिकुलर टेस्ट केस। So we can discuss. Guys, please hit the like button also, right? For all those who have not liked the stream, please hit the like button. Okay. Sorry, guys. So let me explain you what we are doing here. हाँ, सॉरी, ठीक है। आई एम ऑडिबल? हाँ। सो अभी लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट वी आर डूइंग हियर, ठीक है। तो हमारे पास एक एरे है इस तरीके से, ठीक है। और इस एरे में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है। और हमें इस एलिमेंट्स के लिए, ये समझ में आ गया ना? हाँ। तुम क्या कर रहे हैं, हम स्टार्टिंग में जीरो इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं जब हमारा प्रीवियस -1 है। और हम सेम चीज कर रहे हैं, हम एक एलिमेंट को आइदर टेक कर रहे हैं नहीं या नॉट टेक कर रहे हैं, टेक या नॉट टेक, राइट। एग्जैक्टली। लूप के अंदर रिकर्जन वाला समझा दो, मतलब मैं समझा नहीं। अच्छा, आप ऐसा बोल रहे हो कि हमने एक लूप ली हुई है, लेट से कि इंट आई इक्वल टू 0 देन आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, और इसके अंदर हम लोग रिकर्जन कॉल कर रहे हैं, आप ऐसा बोल रहे हो। तो कोई ऐसा क्वेश्चन है क्या विच यू नो, जहां से आपको ये डाउट आया, तो आप मुझे वो क्वेश्चन भेज सकते हो, मैं वो क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इफ यू हैव एनी सच क्वेश्चन। हाँ जी, ऐसा कोई क्वेश्चन है क्या? देखो मैं बताता हूँ ऐसा कैसे काम करता है। लेट मी एक्सप्लेन यू, ठीक है। मे बी आपने इसको डीएफएस या बीएफएस में देखा होगा, ठीक है। डीएफएस में हम लोग सेम काम करते हैं। मान लेते हैं कि मैं जीएफजी का सी प्लस प्लस कंपाइलर ओपन करता हूँ, ठीक है। वैसे थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। ओ भाई, इसका यूआई चेंज हो गया क्या जीएफजी कंपाइलर का? मैंने पहली बार देखा है इसको। कोई बात नहीं, काफी अच्छा कर दिया बाय द वे। नाइस नाइस नाइस।
हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे कि हम क्या करेंगे, लेट्स से हमने यहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन लिखा हुआ है एक सिंपल सा, और इस रिकर्सिव फंक्शन में क्या हो रहा है कि हम एक नंबर n ले रहे हैं और ये फंक्शन अगर n की वैल्यू 0 है तो ये रिटर्न कर देगा, एल्स ये n की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, ठीक है, और फिर ये n-1 के लिए कॉल कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखो ये रिकर्सिव फंक्शन एक्चुअली में कर क्या रहा है, तो ये रिकर्सिव फंक्शन n से लेके 1 तक की वैल्यूज को प्रिंट करेगा। तो अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूं यहां पर विद द वैल्यू 5, ठीक है, तो क्या करेगा ये कि ये 5 से लेके 1 तक वैल्यू को प्रिंट करेगा, ठीक है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब आप बोल रहे हो कि लूप के अंदर इस फंक्शन को कॉल करो। देखो ये फंक्शन कैसे कॉल हो रहा है, अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं तो पहले हमने इसको रिकर्जन ऑफ 5 के लिए कॉल किया तो उसने 5 को प्रिंट कर दिया, फिर उसने रिकर्जन ऑफ 4 को कॉल किया, 4 को प्रिंट कर दिया, फिर 3 को कॉल किया, 3 प्रिंट किया, 2 को कॉल किया, 2 प्रिंट कर दिया, 1 को कॉल किया, 1 प्रिंट कर दिया, राइट। एंड जब रिकर्जन ऑफ 0 पे जाएगा तो वो बेस केस हो जाएगा, तो वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फंक्शन जो है n से लेके 1 तक के नंबर्स को प्रिंट कर रहा है। इतना क्लियर है। आप कह रहे हो उसको लूप के अंदर एग्जीक्यूट करो, तो मान लेते हैं हमने एक लूप चला ली यहां पर 1 से लेके 5 तक की, ठीक है, और 1 से लेके 5 तक क्या होगा कि हम उसे कॉल कर रहे हैं विथ i, ठीक है। तो सेम फंक्शन लोग क्या कर रहे हैं कि 5 बार कॉल कर रहे हैं। मैं लाइन चेंज भी कर देता हूं यहां पर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो हम सेम फंक्शन को 5 बार कॉल कर रहे हैं विद डिफरेंट वैल्यूज ऑफ i, दैट्स इट। तो क्या होगा, पहले 1 के लिए रिकर्जन कॉल होगा और वो पूरा रिकर्जन कॉल कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं कि एक कंप्लीट हुआ फिर दूसरे पे रिकर्जन चली गई। देखो पहले क्या होगा कि हम लोग यहां पर इसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहले i इज इक्वल टू 1 के लिए रिकर्जन कॉल जाएगी, वो पूरी कंप्लीट होगी। उसके बाद i इक्वल 2 के लिए जाएगी, वो पूरी कंप्लीट होगी। फिर i इक्वल टू 3 के लिए जाएगी, वो पूरी कंप्लीट होगी। तो i इक्वल टू 1 के लिए 1 प्रिंट होगा, 2 के लिए 2 1 प्रिंट होगा, 3 के लिए 3 2 1 प्रिंट होगा, एंड सो ऑन। तो आप देखो यहां पर आपको वैसा ही आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग बोलोगे तो मैं रिकर्जन के लिए एक सेपरेट मास्टर क्लास कर सकते हैं, ठीक है। भी हम लोग ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, तो जो भी मैंने क्वेश्चन आज सॉल्व कराए हैं यार, हमने आज जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं क्लास में, हम उन सारे क्वेश्चंस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो हमने आज स्टार्ट किया था फ्रॉम द वेरी फर्स्ट नैपसैक प्रॉब्लम। तो हमारा आज का एजेंडा क्या था और हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं, ठीक है। या थैंक्स अभी। तो आज का हमारा पहला एजेंडा था कि हमने नैपसैक पढ़ा। सर मैंने आपको पहले बता चुके हैं, कहाँ गया, हाँ। तो हमने सबसे पहले आज क्या किया, हमने आज नैपसैक प्रॉब्लम पढ़ा जिसमें हमने फ्रैक्शनल नैपसैक पढ़ा, 0-1 नैपसैक पढ़ा और अनबाउंडेड नैपसैक पढ़ा। फिर हमने 2 और प्रॉब्लम सॉल्व किए, एक था टारगेट सम, एक था सबसेट सम, ठीक है। उसके बाद में हमने लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस पढ़ा और लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस हमने 2 वेरिएशन भी सॉल्व किए, ठीक है। एक वेरिएशन था आपका ये वाला मिनिमम नंबर टू डिलीट एंड इंसर्ट, एंड दूसरा था हमारा लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस, हमने ये सॉल्व किया। उसके बाद में हमने लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस सॉल्व किया, पढ़ा पहले, जो कि 2 तरीके से होता है। पहला होता है डीपी अप्रोच, वो हमने देखा, फिर हमने उसको बाइनरी सर्च से पढ़ा, फिर हमने उसका भी एक वेरिएशन यहाँ पे सॉल्व किया विच वाज मैक्स सम इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस, राइट। सो ये हमारा आज का एजेंडा था गाइस, और हमने आज ये पूरा ही चीजें कवर कर ली है। तो इस तरीके की जो डीएसए मैराथन है यार, हम लोग प्लान कर रहे हैं कि जो जीएफजी यूट्यूब चैनल है उस पर हम लोग हर वीकेंड इस तरीके के मैराथन को प्लान करने का प्लान कर रहे हैं, मतलब प्लान करने का सोच रहे हैं। भैया काउंट नंबर ऑफ एलाइज वाला प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा? काउंट नंबर ऑफ एलाइज वाला प्रॉब्लम यार बैक ट्रैकिंग से होगा। अगर आप बोल रहे हो तो हम इसको नेक्स्ट, अभी तो वी डोंट हैव मच टाइम, वो प्रॉब्लम थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा और वो बैक ट्रैकिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जब भी हम लोग बैक ट्रैकिंग की मास्टर क्लास करेंगे यस, तब मुझे याद दिला देना, तो वो मैं आपको करा दूंगा। नॉट जस्ट काउंट, देखो काउंट तो हो ही सकता है, काउंट में दिक्कत नहीं है,
प्रिंट करने का बात कर रहे हैं शायद, ठीक है। तो हम लोग वो चीज वी कैन डिस्कस इन द बैक ट्रैकिंग क्लास, ठीक है। बट दिस वाज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ डीपी, ठीक है। तो आज का हमारा रिजल्ट डीपी था। तो हमने 2 क्लासेस डीपी करी गाइस। हमने कल एक क्लास करी डीपी की, जहां पर हमने बेसिक्स ऑफ डीपी समझा था, फिबोनाची समझा था, हाउस रोवर प्रॉब्लम समझा था। उसके बाद में हमने आई थिंक कुछ और 1D डीपी प्रॉब्लम किए थे, फ्रॉग जंप किया था। आफ्टर दैट हमने डीपी और ग्रिड का एक प्रॉब्लम किया था। आज के केस में हमने नैपसैक किया, एलआईएस किया, एलसीएस किया, कुछ 2D डीपी के और प्रॉब्लम्स भी किए। अगला जो हमारी डीपी की सीरीज होगी उसमें हम थोड़ा और एडवांस जाएंगे, हम पार्टीजन डीपी पे जाएंगे, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे, और थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को ग्लिम्स दूंगा डिजिट डीपी और बिटमार्क्स डीपी का भी, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्लास का एजेंडा रहने वाला है। फॉर इंट previous is equal to 0 previous level, if previous is less than level, answer is equal to max 1 plus solve फंक्शन है। अच्छा, आई थिंक यार यू आर टॉकिंग समथिंग एल्स अभी, है ना? हाँ, मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, बाय द वे, जो लोग भी इन द डीपी सीरीज व्हाट वी हैव 10 मिनट्स लेफ्ट, ओके। अच्छा, एलआईएस का कोड है, ठीक है, ठीक है। एलआईएस का कोड है ये, हाँ ये एलआईएस का कोड है, ठीक है। तो वही है ना, देखो ये इसमें आपने एक लूप आप भूल गए हो, ठीक है। दिस इज नॉट अ कंप्लीट फंक्शन, दिस इज द टेबुलेशन अप्रोच ऑफ एलआईएस, जिसको आप लूप्स के थ्रू करते हो। तो मैंने आज जो प्रॉब्लम कराया उसमें मैंने पहले रिकर्जन के थ्रू कराया था, फिर मैंने उसको मेमोराइज किया था, फिर मैंने आपको बाइनरी सर्च बताया था, ठीक है। तो टेबुलेशन आई हैव गिवन यू एज द असाइनमेंट। ये तरीके से कैसे सोचा कोड लिखने को, देखो यार अभी जो टेबुलेशन अप्रोच होता है वो इजी नहीं होता है, ठीक है। इवन जो बहुत हार्ड प्रॉब्लम्स है ना, हो सकता है मैं खुद भी उसका टेबुलेशन डायरेक्टली ना लिख पाऊं, इट्स जेन्युइन, नहीं लिख पाऊंगा भाई। तो जो बेस्ट तरीका है डीपी को सीखने का वो ये होता है कि जब मैंने डीपी सीखना स्टार्ट किया था ना, आप बोलो अभिनव यार आप सीधे टेबुलेशन लिख दो, नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो पॉसिबल कैसे है कि आप पहले रिकर्जन लिखो, फिर आप लूप में रिकर्जन है। अरे देखो देखो देखो, 2 तरीके होते हैं अभी। मैंने कैसे किया, मैंने किया कि मैं आई ले रहा हूं, i+1 पे जा रहा हूं। अच्छा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये लूप में रिकर्जन नहीं है भाई, ये रिकर्जन के अंदर लूप है, ठीक है। आप उल्टा बोल रहे हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो आप इसकी बात कर रहे हो, राइट? आपको इससे डर लग रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है। देखो ये कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये चीज, ठीक है। सो हाँ, पिक या नॉट पिक ये भी है भाई, ये थोड़ा डिफरेंट है। देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारे पास एक इंडेक्स है, ठीक है। ये हमारी अभी करंट इंडेक्स है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो हमारी करंट इंडेक्स है ये किस इंडेक्स के बाद में आ सकती है। तो उन्होंने इस इंडेक्स के पहले की सारी इंडेक्सेस चेक कर ली कि अगर हम इस इंडेक्स को 0 के बाद लें, 1 के बाद लें, 2 के बाद लें, तो क्या रिकर्जन कॉल जाएंगी। तो हमने 0 से लेके इस इंडेक्स तक की लूप चला ली, और फिर हमने हर एक इंडेक्स के लिए, देखो हम क्या कर रहे थे, हम प्रीवियस को इनिशियली लेके चल रहे थे और हम इंडेक्स को बढ़ा रहे थे, राइट। यहां पे लोग क्या कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि आपको जो इंडेक्स दे रखी है उसके पहले जितने भी प्रीवियस हैं उन सारे प्रीवियस के लिए आप चेक करो और उनके लिए आप रिकर्जन कॉल करो। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट मेथड होता है, इसीलिए मैं आपको मोस्टली जो मैं खुद भी जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं, आई मोस्टली ट्राई कि उसको टेक और नॉट टेक केस से ही किया जाए, वो सबसे बेस्ट रहता है समझने में। पर आपको ये समझना, आप इससे समझ सकते हो, यहां पर वो थोड़ा रिवर्स कर रहे हैं। उन्होंने आपको एक इंडेक्स दे रखी है और वो इस इंडेक्स के प्रीवियस जितनी भी इंडेक्स हैं उन सबके लिए रिकर्जन कॉल कर रहे हैं। डज इट मेक सेंस अभी? ठीक है, गिव अ ट्राई रन, यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम करने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कल हम लोग मैट्रिक्स, कल मतलब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी ना डीपी की, नेक्स्ट वीकेंड होगी प्रोबेबली, उस क्लास में हम लोग एमसीएम पढ़ने वाले हैं, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन। और मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन में भी क्या होगा कि हम ऐसे ही एक रिकर्जन के अंदर लूप लेंगे। मैं आपको दिखा देता हूं क्या होता है मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन में, कि एमसीएम मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन, यहां पर भी क्या होता है ना कि देखो आपका रिकर्जन के अंदर लूप होती है, देखो ये रिकर्जन है, इसके अंदर एक लूप है। तो ये ऐसा प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, थोड़ा सा एडवांस होता है ये, इसीलिए मैंने आज नहीं बताया, ठीक है।
ड्राई रन कर दो, ठीक है, ड्राई रन मैं कर देता हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर आप, आपको ड्राई रन कर देता हूँ, यहाँ पे लास्ट इंडेक्स शुरू हो रहा होगा ना, हाँ ठीक है। तो ये लोग हर एक इंडेक्स के लिए कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कॉल कर रहे हैं, आपको ड्राई रन करके दिखा देता हूँ इस वाले कोड को। मान लेते हैं कि हमारा, वैसे ये बेटर तरीका नहीं है, बेटर तो वही है जो हमने आपको बताया है, ठीक है, ये रहा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 5 है, 100 है, 7 है, 8 है, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है कि हर एक इंडेक्स के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए इस फंक्शन को कॉल कर रहा है। अब ये फंक्शन क्या निकालेगा, ये फंक्शन निकाल रहा है भाई कि अगर करंट इंडेक्स आई है तो प्रीवियसली हम कौन कौन से इंडेक्सेस से स्टार्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं अगर हमारी करंट इंडेक्स है 0, तो हम उसके पहले किस इंडेक्स से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी से भी नहीं, तो हम यहाँ 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब मान लो अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो हम 1 के पहले कौन कौन से इंडेक्सेस ले सकते हैं, क्या हम 0 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो जब हमने 0 लिया तो नई रिकर्जन कॉल डाली, मैक्स ऑफ ARR ऑफ 0 + 1। देखो समझना मैंने क्या बोला, मैंने मान लो पहले कॉल किया इस इंडेक्स से, ठीक है। तो मैंने कहा कि रिकर्जन ऑफ इंडेक्स नंबर 3, तो मैंने रिकर्जन ऑफ इंडेक्स नंबर 3 डाला है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा था, मैं कर रहा था कि 3 के बाद हम कौन से इंडेक्स ले सकते हैं। मैं क्या कर रहा था कि हम 3 के बाद कौन से इंडेक्स ले सकते हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं कि हम 3 के पहले कौन से इंडेक्स ले सकते हैं। तो ये 3 के पहले की सारी इंडेक्सेस को चेक कर रहे हैं। तो पहले 0 को चेक करेंगे, क्या हम 0 ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, बिकॉज 0 इससे छोटी है। तो हमने एक केस लगाया 1 + रिकर्जन ऑफ 0। हमने एक केस लगाया, क्या इसको ले सकते हैं, इसको नहीं ले सकते क्योंकि ये बड़ा है। इसको ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। तो 1 + रिकर्जन ऑफ 2। अब रिकर्जन ऑफ 0 के लिए क्या हुआ, वो तो 0 ही है, एंड पे आ गया, तो बेस केस हो गया, मतलब रिटर्न 1 कर दो। तो रिटर्न 1 हो गया, यहां से आ गया आंसर 2। अब रिकर्जन 2 के लिए क्या होगा, इसके पहले कहां जा सकते हैं। तो रिकर्जन 2 के लिए क्या होगा कि हम पीछे गए, 1 को ले सकते हैं, नहीं ले सकते, 0 को हाँ ले सकते हैं। तो रिकर्जन 1 की वैल्यू हो गई 1 + रिकर्जन ऑफ 0, और रिकर्जन ऑफ 0 फिर से 1 हो जाएगा। तो यहां से आंसर आया 3। तो दोनों का मैक्सिमम कितना हुआ, 3। तो 3 हो गया आपका आंसर, जो कि है 5, 7, 8। समझे आप। तो मैं क्या कर रहा था, मैं बोल रहा था आई से आगे जाओ, ये लोग बोल रहे हैं कि आई के पहले आप कितना ले सकते हो। बात समझे, और आप पीछे चलते चले जाओ। अभी सेम चीज है, एक दूसरे तरीके से कर रहे हैं, राइट। बढ़िया, ठीक है यार। बाकी हम लोग ऐसे प्रॉब्लम्स ऑल करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। Cool guys, then I hope that today's class was helpful for you, where you have learned something new. Okay, so अब आसान लग रहा है, बिल्कुल आसान लगेगा, ठीक है। तो I hope that you have done something new, you have learned something new. We will plan to have these classes regularly. By the way, if you guys are looking for any of the courses from Geeks for Geeks, we are having a very great offer currently. If you will buy any course on Geeks for Geeks, which okay, if you have any course on Geeks for Geeks and if you complete the 90% of the course in 90 days, you will get the 90% refund of the course. Let's say अगर आपने 1000 रुपए कोर्स लिया है, let's say you have bought a course of 1000 rupees and you have completed the 90% of the course in 90 days, you will get 900 rupees back to you, right? So please do check out this offer. This is a very great offer currently going on, 390 challenge on Geeks for Geeks. Do check it out. Cool guys, then let's conclude this class. We will again meet in the next class, in the next DSA marathon. Till then, thank you. Please share the video with your friends, like the video. Thank you. Happy coding, take care, bye bye, good night. We all know that the tech job market has become really challenging, and it is not always going to be like this. Seeing all this, we have come up with something that we never offer. You all know that we have been doing this 390 challenge where you finish 90% of the course. In 90 days, you get 90% of the cost. In addition to this, we have also reduced the upfront fee by 30%. So make the best use of this and invest in your skills, the all-time most valuable asset.
We all know that the tech job market has become really challenging, and it is not always going to be like this. Seeing all this, we have come up with something that we never offer. You all know that we have been doing this 390 challenge where you finish 90% of the course. In 90 days, you get 90% of the cost. In addition to this, we have also reduced the upfront fee by 30%. So make the best use of this and invest in your skills, the all-time most valuable asset.